Hello. Yes, may I request both the captains to be ready for the toss. In the next 5 minutes, we get to the pitch for the toss. It is team Super Kings versus team Warriors. This match is to just try and see which team starts to dominate its position on the points table. A very important match. Yes, for the moment we have Monish Shah, Captain Abhay Vaidya and Shailesh Chadwa, the three organizing committee members in attendance. And I've already been asked to be ready for the toss in the next 5 minutes. It will be the two umpires, Sushant Manjrekar and Mr. Raju Vishwas Rao. A big thank you to the owners of Team Super Kings, Mr. Aditya Gupta, Mickey Modi, Amardeep Singh Baraj. Team Super Kings led by the very experienced and the multidimensional Vikas Linga. Thank you to the camp of Warriors, Nitin Bhai Singhal, Lalit Bhai Vich and Rajesh Patni. Looks like it's going to be Rajesh Patni to lead the team. Yeah, we do not have too much details about Aryan, but the news that we have had is that he's injured and he will not be playing for the next 2 to 3 weeks. He's been advised to rest. He's injured his ribs. So yeah, let's see how it goes. Rajesh Patni will soon confirm what it is.
Yes, this is match number 20. Team Superkings at position number 5. 3 matches, 2 wins, 1 loss, 4 points. A very healthy net run rate of 1.377. On the other hand, Team Warriors occupies the second spot on the points table. 4 matches, 3 wins, 1 loss, 6 points and 0.669 the net run rate. The two captains in all readiness, that is Vikas Linga and Rajesh Patni. It's going to be Vikas Linga who will take the call. Shailesh Chalwa to flip the coin. Toss time. GS is the call from Vikas Linga, and it is. Yes, Vikas, you win the toss and you will be looking to consolidate your position on the points table so that as you move further into the business and maybe a bat in office, then these 2 points will be very crucial. So you need to win this one and be in a very comfort zone. Yeah, absolutely. Actually, every match is very important because the tournament is big and there are 10 teams. Only 4 teams can qualify. So each match we are taking it very seriously, and we don't want to lose any game. That's how we have prepared ourselves. It's been a reasonably tidy start for Superkings, but definitely Superkings is yet to show its best in this tournament. Absolutely, we are going to improve every game. The best will come, I think, in the finals of the tournament. So let's keep on improving. That's what I always tell my teammates. And we hope to do good today. Thank you and wishing you the very best. I have with me... I would field first. I will be inviting the captain of Team Warriors to put forward his views and also something on Aryan. Aryan has a rib fracture. He is out for 3 weeks, 3 to 4 weeks. I think he will be playing next match. Our next match is on 6th of January. And coming to this match, Superking is one of the top 2 teams, very tough teams. And we have 3 changes. Aryan, Vijay Singh and Darshan Gala are not there. Darshan has an appendix operation, so he's out for 3 weeks. And let's see, we'll have a good fight. Yes, you have to forget of who are not in your squad. Your aim will be to consolidate the position. Anything can happen in a game of cricket. If you play positive cricket over 40 overs, maybe this match could be yours. Yes, definitely. We can see the yesterday match. Yesterday last over 7 runs and bowling team won the match. So we'll try full, give our 100%. Yes, we pose for the national anthem before we pose for the group photographs. It's time for the national anthem. We all stand in attention. We get the caps and hats off. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
Yes, time for the group photograph. Both the teams kneel down, half the squad. We all try and be in one frame. Ganpati Bappa. Yes, good evening, friends. We try and dissect the wicket to the limited knowledge that I have about the 22 yards. Let me give it. So this is a newly laid wicket. You know, the whole ground has been newly laid, and also the wicket, fresh soil. We've got around 6 to 7 wickets on the plot, and every single day we use a fresh pitch. This is match number 20. The wickets have been a little unpredictable, not easy to predict the behavior of the wicket. A dry surface, there is a little grass on it, but most of the grass is the brown tinge, so it's not going to be too much of a concern. The team batting first, mostly all the teams are winning the toss and looking to bowl first. If you look at the surface, not that rock hard, a little soft, so maybe there will be little spongy bounce in it. But yes, as we move further and the dew comes into factor, the ball will start to skid onto the bat. As it looks like wicket each side. Okay. Hello. Hello. Check. Akash. Namaskar, Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam. A very good evening and a warm welcome to match number 20 of the DBS Gsc T20 Cricket League 2023-24. This is the biggest event at the Goregaon Sports Club in terms of sheer talent that is on display. A total of 350 plus players had registered themselves to go under the hammer as far as the auctions were concerned. Quite a few players have had to sit back. We had an emerging league and around 10 emerging league players qualified to make it to the main DBS Gsc T20. So yes, this is match number 50. Tonight it's going to be Superkings versus Team Warriors. Team Warriors occupy the very strong number 2 position on the table. But yes, again, tonight they are without the services of their star player, Aryan Patni, who will be out of action for the next 3 weeks. Because of a rib fracture, 2-3 ribs of him
have been fractured and he's been advised rest for around 2 to 3 weeks. On the other hand, team Superkings is a very strong team. Presently, they are at the number 5 position. 3 matches, 2 wins, 1 loss, 4 points. 1.377 is the net run rate. So both the teams tonight will be wanting to win the match and solidify their position on the table to be in some kind of a comfort zone. You just got to win the matches as an insurance if you have got a bad day in office as you move into that business end. Yes, the standard of cricket in this tournament has really been top class, and we expect to really watch some exciting matches. We had an Bollywood blockbuster kind of a finish yesterday. That was the batting team requiring 7 runs to win the match. Unfortunately, the bowling team there defended that 6 runs and they won the match. So anything can happen on any given day. It's time to thank our sponsors, the Development Bank of Singapore, for being the title sponsor of this tournament. DBS is indeed supporting all the cricket events, sports events in the country. So big thank you to our title sponsor, DBS Bank. Live more, bank less is the tagline. Time to thank our co-sponsors, that is the Cryptomania web series, Shakti Plastic Industries, KL Tanzania Construction, the KCD, the Sejal Group. A big thank you to all our associate sponsors for coming on board. We start with the live action in the next 15 minutes. 6:55, the umpires Sushant Manjrekar and Raju Vishwasrao sir get to the wicket to get the match started on the dot. It's going to be a 7 p.m. start as always. Team Super Kings and Team Warriors. Team Super Kings winning the toss and opting to bowl first. That's the news from the center. This is your host and host Nishat Kora on behalf of the Goregaon Sports Club. Thank you. A big thank you to the viewers on YouTube connected with this event. Hopefully you guys are enjoying this DBS Gsc T20 Cricket League. Thank you. This is a useless pile of waste, and it will remain a useless pile of waste unless something is done, like turning it into this, or any of these, or any of these. Seriously, it's possible. Ask these guys. We will help you turn your waste into value by recycling even the non-recyclable. Meet the pillars of the Shakti Plastics Industries. Not these pillars. Yes, okay. Meet the pillars of the Shakti Plastics Industries. The true waste management specialists fighting plastic waste for over 50 years. Not like that. The war against plastic waste began in 1969. Waged by Mr. Vishwanath Poddar, the founder of the Shakti Plastics Industries. Mr. Poddar started a revolution against plastic waste by manufacturing all types of reprocessed plastic granules from waste or scrap, which helped the company become one of the leading recyclers of polymer in India. Today, Shakti Plastics Industries has grown to become one of the leading company in total waste management solutions. And that's the real Shakti behind Shakti Plastics.
The company is having a wide network of collection centers pan-India. Every day, the plastic waste collected is processed at their 2 lakh square feet facility at Palghar, and disposal of non-recyclable waste is supplied to cement companies to use as fuel in cement kilns. With a proper training module in place in respect to collection, segregation, baling, weighing, recycling and processing of such waste from streets, Shakti is proud to be one of the companies actively involved in the Swachh Bharat Abhiyan, a cleanliness initiative by the Government of India. This is Shakti Plastics Industries, where it is an everyday effort to manage plastic waste in the best possible way. And we are rightly on our way to minimize the carbon footprints by recycling plastic while increasing our footprints across the world.
Yes, it's time for the umpires to take that white lady away from the guest of honor's hand and get the match started. Remains to be seen who will be holding that lady in his hands. And yes, Abhay is looking more smart today with that new hairstyle of his. So he deserves that white lady, doesn't he? But still he'll have to let her go. It is the umpire who will be taking that white lady away, and Sushant Manjrekar. Abhay Vaidya has gone 6 to 7 years younger. And I'm sure even Pramod Kashyap will be inquiring as to how did he get that new hairstyle. I've already inquired. Yeah, we've got Pramod Kashyap, Shailesh Chadwa, Captain Abhay Vaidya, and Monish Shah, the 4 organizing committee members. There is Viraj Karandikar from the GSC staff. He was wishing both the umpires the very best. Team Superkings winning the toss and deciding to bowl first. It's going to be the opening pair of a team Warriors looking to bat first. They are without Aryan Patni. Let's not talk about Aryan tonight. Aryan is not there. Then there is Vijay Singh who is not there. Darshan Gala is not there. 3 players not playing. So obviously 3 extra players getting an opportunity. They are in a very strong position, and it's a case of only 1 match to be missed by Aryan. So he will be fit and fine for the next match, that is on the 6th of Jan. After the 19th of December, we have got a break of a few days, and we will be playing only in the new year. Christmas time, the new year time, it's going to be a break of around 11 days before we once again resume the DBS Gsc T20. A big thank you to our title sponsor, the DBS Bank. It is Nishil Mittal and Gaurang Karakasya getting to the wicket. Yes, all set. Rohit Saraf to bowl from the DBS Pavilion end. The man on strike, that is Gaurang Karakasya. He already has a half century to his credit in this tournament. And yes, a wonderful opportunity for Nishil Mittal. Rohit Saraf has got that athletic physique. Oh yes, this should be interesting. Lights, camera, action, shine on. We are playing the countdown. Yes, so there will be some butterflies in the stomach as we get this important match started. It's good to be nervous a little bit, that makes you alert.
Playtime. Played into that backward of point area. Off the mark, Gaurang. Well, this is a wonderful opportunity for Mittal. He can play his natural game. Into the pads, going down the leg side is what he indicates. Straight away the indication from the umpire was that he will not be interested one bit. Nevertheless, such a good delivery, a testing delivery. And the giveaway was that late appeal from Rohit. After a fraction of a second, he started to be animated into that appeal. So maybe that really was the giveaway. Nevertheless, such a fine delivery. Early days, lots of cricket left to be played. Playing with soft hands, not so well timed, and that is why that one run came in, because the ball was traveling at a slow pace to the man in that extra cover region. Up and away is Nishil Mittal, winning the toss and deciding to bowl first. That is Team Super Kings. Off the inside-ish edge, thickish edge, the ball into that backward square leg area. Let's have a look at Team Warriors. Saket Adhikari, the batting super sub, Shri Gopal Jaju, Nishil Mittal, Vikas Goenka, Rajesh Patni, Naman Chawla, Rahul Gala, Gaurang Karakasia, Hardik Panchal, Kashyap Popat, Chris Sharma, Mit Wakharia. So that's the squad for Team Warriors. This time slightly back off length. It's time to have a look at Team Super Kings. Juguraj Mehta, Ronak Sachdeva, Vikas Linga, Chintan Shah, Praneeth Bhane, Dhaval Shah, Dhananjay Vengurlekar, Rohit Saraf, Pritpal Singh Baraj, Utsav Parekh, Rajiv Shah, the batting super sub, bowling super sub Parag Jain, and we also have Subhankar Joshi in the squad. A slightly tentative with his footwork early days. Quite a decent over being bowled by Rohit Saraf. Not a bad start at all. Putting the ball into the right areas. Asking questions of the opening batters. That is the primary job of a opening bowler, to test the temperament and the character of the batsman with the new ball. The score at the end of the first over is 3 for no loss. Team Super Kings definitely wanting to win the fourth round robin league match that they are playing to consolidate the position on the table. Yeah, the more matches you win at the start of the league format is kind of an insurance as you move further into the business end of the tournament. You never know when you guys will have a bad day in office. So as an insurance, you try and win as many matches as possible at the start of the tournament.
3 matches, 2 wins, 1 loss. That is Super Kings. Team Warriors, 4 matches, 3 wins, 1 loss. Oh, he gets his man. Gaurang Karakasia slow on that one. That was the swinging Yorker. He nailed it. Gaurang Karakasia on his way back to the pavilion. He's drawn first blood. Maybe with this wicket he will set the cat amongst the pigeons. The first Shakti Plastic Industries wicket of the evening. And that too, what a wicket. That is Gaurang Karakasia. What a start for Bane. To bowl that kind of a delivery first up at the start of your spell, that is extraordinary. And in comes Saket Adhikari. Saket Adhikari had a very good innings the other night. So tonight, especially when you do not have Aryan in your lineup, the extra responsibility will have to be borne by the star players. The first 4 to 5 batters will have to shoulder the burden of the absence of Aryan Patni, Darshan Gala and Vijay Singh. So from that point of view, team Warriors will have to be very strong in the mind. It's a very important day, important match. You want to be winning as many matches as possible at the start of the tournament. This is a longish journey, 8 round robin league matches to be played by each and every team. We are starting to get into the 50% of the TBS Gsc T20. Total of 44 matches. This is match number 20. What a start for Bane. Oh yes, he is bowling with his tail up. He's got that rhythm going. That early wicket of Gauranga will do wonders to his psyche. He will be all pumped up. He will be bowling with his tail up. A spring in the stride for team Super Kings. Yes, your body language indeed sends a message across to the camp of the opposition that you're here to win the match. And you really do mean business out here. Got to play with a positive intent always. The ball nicely carrying to Vikas Linga. Good shape on the ball, getting that late inside movement. There is some movement in the air at the start of this match. The conditions at the start of the evening absolutely favorable, and that is why Vikas winning the toss without any hesitation, deciding to bowl first. Oh, much better and well played as well. Nicely leaning into that one. Yes, that calling has to be spot on. You do not want to be losing your top order batsman to a run out. Cannot afford it. 2 very seasoned campaigners at the wicket for team Warriors. That is Saket Adhikari and Nishil Mittal. I am really more excited and interested as to how Nishil Mittal approaches his innings. Oh, looking for the Yorker, nicely done. That was maybe slightly slow to the air, nicely disguising the slow one. Oh, this is an interesting start. He's bowling with his tail up. Just what the doctor ordered for team Super Kings. You want both your seam bowlers to be right on the money. They are making the batters play at all times. Back of length, nicely done, quite the right call. Just look at the offside corner, it is absolutely packed. 2 over 6 for 1. Early days, 1 wicket down for team Warriors. They'll have to do some resurrection. They're going to be playing the orthodox cricket at the start of the innings. The Mool mantra is to stay at the wicket, treat the bowling on its merit. If you get 2 loose deliveries right away, you want to try and put those 2 deliveries away. If it's a good ball, you want to give it the due respect and just play it into the gap, maneuver it into the gap,
take those singles, rotate the strike. Not the time to manufacture the shots. Not at all. Two very good teams up against each other. Should be a good game. Saket 2 facing Rohit. Oh, that is a nice play. No need to run for that one. Cryptomania boundary. The first for Saket Adhikari. See, no room for error. Absolutely no room for error. A small mistake and it has cost the bowler 4 runs. He realizes it. He knows it. And will be looking to make amends. Nicely done. This time outside the off stump, back of length coming into Saket. Saket really up to it. Test of character for Saket and Nishil Mittal. The ball is nicely coming onto the bat. So yes, if you put your mind to the job, this could be your day. Oh, slightly keeping low. Good channel outside the off stump. Although he really put his bat to play out the delivery, did not chase it. At the very last moment, he held his horses. Oh, that is nicely put into the ball, into the infield, and that will run away. Cryptomania web series boundary there off the blade of Saket Adhikari. That is Nishil. That will really give him so much of confidence. Starting to get into the groove. Still early days. He will be looking to play that big knock. Golden opportunity for Nishil. Such a good cricketing shot, not a bad delivery. Just timing the ball, maneuvering it into the gap. Nicely done. Shot of a man in good confidence. Yeah, this tournament will be the big stage for somebody like Rohit Saraf. Rohit has got the athletic figure to enhance his reputation as a seam bowler. Is quite tall. Nice approach to the bowling crease. Is bowling well. He's been put away for a couple of Cryptomania boundaries, but apart from that one delivery that was straying down the leg side, he's bowled quite decently otherwise. On that occasion, the ball stopping and coming onto the bat. End of the over from Rohit Saraf. The score is 3 overs, 15 for 1. Pranit Bane to continue. The two Bane brothers are very talented. One is a spinner and one is a medium pacer. Both the players are good handy batters. Yeah, Pratik can really bend his back and generate some good speed. Two fine new ball bowlers in the lineup of Superkings.
A man stationed in the first slip, second slip rather, that is Rohit. Oh yes, he's looking to bowl those in-swinging Yorkers. At this stage is not looking to bowl fast. He's putting all the onus into his pitching. Some movement in the air, for Pratik. The seam presentation is definitely the key there. Yeah, that's a two-paced wicket, isn't it? Two-paced wicket. At times the ball stops and comes onto the bat, so you got to be very careful. You got to watch the ball come out of the hands of the medium pace bowler, and you got to watch it quite late. You cannot commit yourself on this kind of a two-paced wicket. Oh, that is such a good delivery, and I got to say that that was a good leave in the end. Initially deciding to go fishing outside the off stump, and then at the very last moment taking his bat inside. So that's a good leave. In fact, some would have felt that he went fishing outside the off stump, but no, he held himself back. Oh, that's a confident shot. Took his time to get into the position and put the ball into the gap. Cryptomania web series boundary to Saket Adhikari. Takes the score to 19. We are into the fourth over. See, this is what you got to do. Whenever you get those freebies, put them away. And play with soft hands, the good ones. Put into the gap, rotate the strike. That really upsets the rhythm of the bowler. This is what you got to do. Treat the bowling on its merit for the first 4-5 overs, especially when you've lost an early wicket. A good partnership now starting to assume proportions. A good comeback delivery, nicely played by Saket. Oh, nicely worked away. A good call from Saket. See, you play the strokes square of the wicket. It is the duty of the non-striker to initiate the call, and straight away it was a firm no. Well done. That was a good looking shot. End of the over from Bhane. 24-1 after the first KCD power play. And now a fresh Ketal Sanya construction over commences, and it's going to be Rohit Saraf to continue. Rohit Saraf is at his very best with the new ball, so maybe Vikas Linga is looking to bowl him through straight away. I mentioned earlier that I'm more excited and interested about how Nishil goes about things. A good start. He's got to capitalize on this good one. He's looking good, but still a long way to go. This is just the start. You want to be staying at the wicket for the next 45 minutes. Saket, we all know what he is capable of. He's already into tidy form, but yes, if Nishil Mittal can get into good form, he will be such a big bonus. A very accomplished player, multi-dimensional player, Nishil Mittal. Yeah, one of the better fielders in the team, Nishil Mittal. Always fields in that deep field.
Oh, what a peach of a delivery, superb delivery. No better delivery than this one, the whole tournament. Cracker of a delivery. That would have beaten any batsman, even an international reputed batsman would have been beaten to that kind of a beauty. Into the length area, stopping and coming, rising and leaving the batsman just a wee bit. That delivery was too good for Saket Adhikari's blade. Too good for Saket. Oh, that is a horrendous throw. Horrific throw. What was he doing out there? He would have taken the head of the wicketkeeper off. Horrendous throw. Maybe that extra excitement. 22 for 1. The men in green and black, Team Warriors, and the men in black, grey and golden, that is the Superkings. Yes, both the teams have smart apparels. Good channel. Just look at the carry. Just look at the carry. He had to raise his hands to collect that ball, Vikas Linga. Such a good channel, nicely left alone. When you're facing those kind of deliveries and you need not face them, the best thing is to leave them, and that is exactly what Saket did. No harm done. Playing it late, opening the face of the bat at the last moment, steering the ball into that third man area. 1 run taken. This is giving a good account of himself, Rohit Saraf. He's starting to look the part, definitely, of what we have seen of him. He's got the potential. He's got the raw material. This is a confident start for Nishil. He's got to convert this start into a match-winning knock. He's got to take the onus on himself to shoulder the burden of the absence of 3 key players. You got to take the burden on yourself, the first 3-4 batters. Oh, he is in such good rhythm. Nishil is in very good rhythm. He is in the groove. He's watching the ball early. He's decisive with his footwork. End of a good over from Rohit Saraf. The score at the end of the 5th K. Talsania construction over. It is 24 for 1. Yes, a warm welcome to the owner of the team Superkings, that is Mr. Jaydev Gupta. I'm not seeing Mickey Modi yet. The only team in the tournament to be sporting the sublimation trousers, that is Team Superkings. Yes, all the teams have smart apparels. Ronak Sachdev now being brought into the attack from the associate sponsor end. The man in that first clip, that is Pritpal Singh Baraj.
Yes, Vikas Linga has led the team quite well in the first quarter. Oh, what a delivery to start the spare. Oh my God. That's a beauty. Left arm round the wicket. The ball angling into the batsman, falling in that length area and then leaving the batsman. Extraordinary. And when you're capable of bowling those kind of deliveries, indeed you need the man in that catching position in the first slip. Quite rightly a man in the first slip position. Now some extra protection into that short mid-wicket region in the single saving position. Rohit is being brought there. The man on strike, Saket Adhikari facing Ronak. Interesting match, good contest between bat and ball. The forecast from the weatherman is a very pleasant evening for a good game of cricket. Well bowled into the business area, very well bowled. The month of December and January in the new year will be the best 2 months for cricket as far as the weather is concerned. February will not be bad. Oh, superbly bowled. It was maybe a stumping chance, but he could not collect the ball in the first attempt. And that is where the excitement was. What a delivery. Superbly bowled. That would be an interesting replay. There you go on screen. Dekhiye, yes. Oh, no, no ways, no ways. Oh, what a talent Ronak Sachdeva is. And if he can get at the top of his game, he will be one of the biggest assets for Team Superkings as we move along in this season. Vikas Linga, just look at the way he's leading the team. Oh, this time definitely there was a sneak in it, yes. This time there was a sneak, no doubt about it. Oh, what an extraordinary first over. That will give him that much required confidence. What a start. Some extra food for thought. Now see what this does to the psyche of the batsman. You start to think over time now. The kind of first over that Ronak bowled, he will force the batsman to think over time. And this is exactly what both these batters are discussing at this point in time as to how do you negate somebody like Ronak. The ball is stopping, gripping the surface, turning. So yes, this will be a good contest, and here comes Jugraj. हरफन मौला खिलाड़ी हम सभी जानते हैं कि जुगराज एक्साइटिंग प्लेयर है, एक्साइटिंग टैलेंट है, जीएससी के लाइनअप में एक बड़ा सितारा है, बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और अपने इमोशंस को दर्शाने से कभी भी नहीं कतराता है जुगराज. आई ऑलवेज रूट फॉर हिम, ही नोज इट. चलिए अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए जुगराज डीबीएस पेविलियन इनकी तरफ से स्ट्राइक पर है अब साकेत अधिकारी. 6 ओवर के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर. देखिए रौनक के उस सटीक ओवर ने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया है. उस प्रेशर को बनाए रखना होगा या तो उस प्रेशर को और ज्यादा पुख्ता करना होगा. आज की शाम इस विकेट में स्पिनर्स के लिए काफी मदद है वाकई में.
लेकिन अच्छे दर्जे की स्पिन गेंदबाजी करनी होगी। अगर उस मदद का फायदा उठाना है तो अच्छे स्तर की गेंदबाजी करनी होगी। सामान्य स्पिन गेंदबाजी के लिए कोई असिस्टेंस नहीं है। वाइड गेंद का इशारा, और पहली 3 गेंदों को अगर देखें, थोड़ा सा मुआयना करें तो खींची हुई गेंद थी। पहले तीनों ही गेंद खींची हुई गेंदबाजी थी, शॉर्ट पिच डिलीवरीज थे। स्पिनर्स के आते ही इस मैच का मंजर थोड़ा सा बदलता हुआ, दृश्य थोड़ा सा बदलता हुआ, चुनौतियों का सामना करते हुए अब ये दोनों ही बल्लेबाज शिकंजा कसती हुई अपने स्पिन गेंदबाजों के चलते सुपर किंग्स। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, गेंद चीरती हुई निकली है, कोई मौका नहीं उस हाफ वॉली को सही अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे निशिल। क्रिप्टोमेनिया चौका, रन संख्या जा पहुंचती है 32 रनों पर। निहायती खूबसूरत शॉट, क्रिस्प कवर ड्राइव। हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर जिजानी साहब का तहे दिल से स्वागत है। गुड इवनिंग मिस्टर जिजानी, द गवर्निंग काउंसिल मेंबर। एक ही हाफ वॉली गेंद की थी और उस हाफ वॉली को सही अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे निशिल। सात के तलसानिया कंस्ट्रक्शन ओवर्स की समाप्ति के बाद टीम वॉरियर्स ने स्कोरबोर्ड पर 32 रन से जोड़े हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। आमंत्रित किए गए हैं टीम वॉरियर्स के बल्लेबाज के पहले इस विकेट का उपयोग करें। रौनक सचदेव का स्पेल बरकरार, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर एसोसिएट स्पॉन्सर एंड की तरफ से स्ट्राइक पर है साकेत अधिकारी। और थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ा जल्दी खेल लिया था अपने शॉट को, थोड़ा सा जल्दी कमिट कर गए थे। इस तरह की चुनौती भरी गेंदबाजी को फेस करने के लिए बिल्कुल उचित बल्लेबाज है साकेत। मैंने पहले कहा है कि आज की शाम इस विकेट में अच्छे दर्जे की स्पिन गेंदबाजी के लिए काफी मदद है, और उस मदद को एक अच्छे स्पेल में कन्वर्ट करना है तो वाकई में सटीक, नपीतुली, परफेक्ट गेंदबाजी करनी होगी। क्या लाजवाब शुरुआत की है रौनक ने, करीबन हर गेंद के साथ प्रश्न पूछते हुए। प्रेशर बढ़ा था और एक बहुत ही अच्छी सोची समझी हुई साजिश के शिकार हुए साकेत अधिकारी। साकेत का विकेट से दामन छूटा, पेविलियन में वापस आते हुए, और अब नए बल्लेबाज आर्किटेक्ट लिखा हुआ है पीछे। ही विल हैव टू बी द आर्किटेक्ट of a comeback here for Team Warriors, but what a spell from रौनक सचदेवा। देखिए प्रेशर बिल्ड हुआ और थोड़ा सा कंसंट्रेशन खोया साकेत ने, और उस बीच उसी जद्दोजहद में अपनी विकेट को खोया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी।
ये विकेट आसान नहीं था, प्रेशर बनाया था, जाल बिछाया था और शिकार हुए साकेत अधिकारी। 10 on 10 to रौनक, 10 on 10। क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो मेरे ख्याल में रौनक की गेंद अंदर की तरफ आएगी। अगर बल्लेबाज अच्छा है तो उतनी आसान बात होगी जब वो गेंद अंदर की तरफ आती है। बत्तीस पे 2। देखिए यही चुनौती होती है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक होता है किसी भी लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस ताले की चाबी किसी के पास भी नहीं है। हमेशा ये चुनौती होती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को गेंदबाजी करना। पहली सामान्य गेंद देखी थी रौनक ने और वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को कर गए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लाइट कराने की कोशिश की थी। फिर से एक बार लो फुल टॉस, 2 लगातार फुल टॉसेस। विकेट के बाद तो और रंगत में आना चाहिए था रौनक ने, लेकिन 2 साधारण डिलीवरीज के साथ अपने उस ओवर को समाप्त किया है। 8 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन ओवर्स के बाद रन संख्या 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पंचाल नए बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और उनके साथ है निशिल मित्तल। निशिल मित्तल ने अब तक 22 गेंदों का सामना किया है। उससे लिहाज से विकेट पे काफी समय बिताया है, सेट हो चुके। अब इस अच्छी शुरुआत को पुख्ता स्कोर में कन्वर्ट करना ये बिल्कुल निशिल जैसे एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए परम कर्तव्य बन चुका है। आज की शाम निशिल मित्तल ने 70 से 80 रनों की एक पारी खेलनी होगी कम से कम। जुगराज मेहता अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर डीबीएस पेविलियन एंड की तरफ से हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर है निशिल मित्तल। जुगराज भी इस टूर्नामेंट के दरमियान काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। इस साल अपनी बॉलिंग एक्शन में थोड़ी सी तब्दीली की है। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, दबंग ऑलराउंडर है। केवल इस प्लेयर के लिए मुझे दिक्कत होती है कहने में कि ये समझने में शायद कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। केवल इसी प्लेयर को लेकर मुझे ये परेशानी होती है, वरना करीबन हर प्लेयर के लिए वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके बारे में अभी तक वो पिक्चर क्लियर नहीं है और शायद इसी में इस प्लेयर की ये जीत है। अगर वो हाथों में इंजरी ना होती तो जुगराज उस गेंद को रोकने की कोशिश करते। निहायत ही खूबसूरत शॉट, क्रिप्टोमेनिया चौका निशिल मित्तल के बल्ले से निकलता हुआ। अपने बॉलिंग पाम पर इंजरी है, वरना तो उस गेंद को रोक लेते शायद। देखिए एक प्रोफेशनल
प्लेयर के लिए, विशेष रूप में गेंदबाज के लिए, चाहे फिर वो सीमर हो या स्पिनर हो, आपको स्टीरियोटाइप गेंदबाजी नहीं करनी है। अगर आप स्टीरियोटाइप गेंदबाज बन चुके तो फिर भगवान ही बचाए आपको, क्योंकि फिर हर मैच में बल्लेबाज के पास वो प्लान होगा कि आपको किस तरह से वो फेस करे। तो यू कैन नॉट फॉल इनटू दैट स्टीरियोटाइप्स, यू हैव टू कीप द बैट्समैन गेसिंग, और इस वजह से आपके पास वो वेरिएशंस होना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली T20 गेम में। तो आपके पास कम से कम 3 अलग अलग किस्म की डिलीवरीज होना जरूरी है। आपकी वो ऑर्थोडॉक्स डिलीवरी होनी चाहिए, फिर वो वेरिएशन वाली डिलीवरी, फास्टर वन, स्लो वन, वो गेंद जो टर्न न होते सीधी निकलती है। तो ये सभी परिवर्तन आपको दर्शाने होंगे आपके स्पेल में, ताकि आपको स्टीरियोटाइप्स नजर ना आओ। अंपायर का इशारा कि इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल होगा। 9 के तरसानिया कंस्ट्रक्शन ओवर्स की समाप्ति के बाद रन संख्या है केवल 41 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए प्रेशर बनाया है, संघर्ष करते हुए इस वक्त टीम वॉरियर्स। उदास मौसमों के खिलाफ संघर्षों के मैदान में मैच में वापसी करने की जद्दोजहद करती हुई टीम वॉरियर्स। विकेट पे बने हुए निश्चल मित्तल काफी समय बिताया है। He's been through that grit and determination, so he's got to stay at the wicket till the very end. He's got to make this presence felt here. He's got to shoulder the burden of team Warriors here. He needs to take his team to at least 135. राजीव शाह नए गेंदबाज फार एंड की तरफ से। पराग जैन, दैट इज पराग जैन के पास काफी अनुभव है, सीनियर प्लेयर है, एक अहम जिम्मेवारी दी है। ऐसी विकेट पर गेंदबाजी कर रहे जहां पर उन्हें मदद मिलेगी। ये लाइन काफी अच्छी है, कैच होने की संभावना, थोड़ा सा मिस जज किया क्रिप्टोमेनिया, चौका मिला वहां पर उस मिस टाइम शॉट के लिए। बल्ला भी हाथ से निकला और शॉट मिड विकेट पे बल्ला है वहां पर। 15 यार्ड चलकर अपने बैट को वापस लेते हुए अजीब और गरीब शॉट, लेकिन 4 क्रिप्टोमेनिया रन्स मिले, महत्वपूर्ण रन्स। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कैच तो था, हमारी बुक्स में तो ये ड्रॉप कैच दर्ज किया जाएगा। अच्छी गेंद, हार्दिक पंचाल को भी देखिए एक मौका मिला है। 3 प्लेयर्स नहीं है, आर्यन पटनी नहीं खेल रहा है और उस अनुपस्थिति की वजह से शायद मौका मिला है, तो इस मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाना होगा। कहना होगा टीम मैनेजमेंट को कि आर्यन टीम में है तो भी मेरी जगह बनती है, वो वाला परफॉर्मेंस दर्शाना होगा। और उनके पीछे टी शर्ट के पीछे लिखा है आर्किटेक्ट, तो ही विल हैव टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ विन हियर टुनाइट। अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची भी रही। सेट बल्लेबाज निशिल को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं उस गेंद को बैक टू द बॉलर खेलने में।
मिस टाइम शॉट और उसी वजह से बचे ड्रिंक्स इंटरवल पर इस तरह का शॉट खेलना क्या ये उचित था? बहुत ही बढ़िया गेंद की थी, आमंत्रित किया था कि बड़ा शॉट खेले, जाल बिछाया था पराग जैन ने, थोड़े से फंसे थे वहां पर निशिल, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं थी और उसी वजह से बच गए। ड्रिंक्स इंटरवल के पहले की आखिरी गेंद पराग जैन गेंदबाजी करेंगे हार्दिक पंचाल को। वाइड का इशारा, पराग जैन थोड़े से नाराज, लेकिन अगर 1 मिलीमीटर भी डाउन दी लेग साइड होगी तो वाइड करार देना ये बनता है। 50 रन बन चुके हैं। ड्रिंक्स इंटरवल 10 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 2 विकेट को खोकर, और अब आने वाले 10 ओवर्स में 80 से 85 रन्स बनाने की मंशा होगी। 140 रन्स कम से कम जरूरी होगी। शायद सुपर किंग्स जैसी टीम के सामने तो 160 रनों की जरूरत पड़ सकती है। चलिए ड्रिंक्स इंटरवल, टाइम हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का। This is a useless pile of waste, and it will remain a useless pile of waste unless something is done, like turning it into this, or any of these, or any of these. Seriously, it's possible. Ask these guys. We will help you turn your waste into value by recycling even the non-recyclable. Meet the pillars of the Shakti Plastics Industries. Not these pillars. Yes, okay. Meet the pillars of the Shakti Plastics Industries. The true waste management specialists fighting plastic waste for over 50 years. Not like that. The war against plastic waste began in 1969, waged by Mr. Vishwanath Poddar, the founder of the Shakti Plastics Industries. Mr. Poddar started a revolution against plastic waste by manufacturing all types of reprocessed plastic granules from waste or scrap, which helped the company become one of the leading recyclers of polymer in India. Today, Shakti Plastics Industries has grown to become one of the leading company in total waste management solutions. And that's the real Shakti behind Shakti Plastics. The company is having a wide network of collection centers pan-India. Every day, the plastic waste collected is processed at their 2 lakh square feet facility at Palghar, and disposal of non-recyclable waste is supplied to cement companies.
Oh, that goes into the fence. The first ball after the drinks interval into the boundary holdings, Cryptomania boundary. 54 for 2. The third umpire for the evening is the organizing committee member, that is Shailesh Yadav, and once again into that backward square leg region, this time a couple added. Oh, that goes into that vacant fine leg area. Maybe a boundary there. Cryptomania boundaries. Welcome runs being added here to the tally of Team Warriors in the post-drinks interval period. Just the kind of over that they wanted to boost their morale. Oh, that is swept away, but there is protection there. And that is Jugraj. He obviously is in some kind of discomfort. Super timing, the shot of the evening. And that is one more Cryptomania boundary, quite an expensive over. This over will turn the tide back in the match. Just the kind of turnaround over that Team Warriors wanted. Against the tide, this is such a welcome over for Team Warriors. 71 for 2, and how many runs in this over? 21 runs in this over already. One more ball to go. DJ. Such a good contribution
by Nishil Mittal. Nice to see that he's playing with extra responsibility tonight in the absence of three key players. This is what you got to do as one of the senior pros in the team. Nishil Mittal, no doubt that he is one of the senior most pros in the team. He's playing like one tonight. 39, that is Nishil Mittal of 37 balls. I mentioned earlier, he has to come up with that 70-80 run knock tonight. 50-60 will not do. The team needs now at least 80 from Nishil. Just the kind of over that team Warriors wanted. They've got one important over to their credit, and maybe the shackles will be broken. Jugraj will bowl from the associate sponsor end. A change in ends for Jugraj. The score at the end of 11K Talsania construction overs, it is 72 for 2. Oh, that is a very animated Vikas Linga. You hardly see him so much animated. The umpire is in the best position to judge it. Oh, that is into the gap. That will run away. No chance whatsoever. Cryptomania boundary, slightly streakish. But yes, where Jugraj made a mistake was giving the batsman room on offer. No room for error. Hardly any margin for error. Not even the smallest margin for error. With that Cryptomania boundary, the score on to 76. Important runs being added here. Even Aditya Gupta is looking animated. यूट्यूब के सभी श्रोताओं का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, सलाम करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि परसों का जो मैच हुआ था, एक दिन में there were 6,500 views. That is a big record. Captain Abhay, 6,500 views in 24 hours to the match that was played 2 days back. Okay. He was one of those 6,500. क्या बात है? इस बीच गौरव तलवार का भी स्वागत है। करण सिंह वालिया जी का स्वागत है। कल के मैच का अब तक 2,500 व्यूज हो चुके हैं। 2,500 व्यूज इन 24 आवर्स। यस, हमारे सभी यूट्यूब श्रोताओं को गुजारिश करता हूं, सब्सक्राइब करें गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का वो यूट्यूब चैनल। मानो अचानक से
एक संजीवनी प्राप्त हुई है ड्रिंक्स इंटरवल के बाद टीम वॉरियर्स को, और मानो अचानक से टीम सुपर किंग्स के लिए मामला थोड़ा सा पेचीदा हुआ है, पता नहीं क्यों। Oh, that is well tossed up, playing it with a cross bat, fetching the ball from outside the off stump into the boundary ropes, Cryptomania boundary. Runs coming in thick and fast. That is one of the key figures for team Super Kings, that is Pritpal Singh Baraj, the senior pro, the man with the golden arm. Oh, that is the 50 plus there for Nishil Mittal, and transfer run out enough to it and watch. The half century for Nishil Mittal. He moves on to 51 with that couple. What an innings under pressure. Super knock. But he has to forget the half century now. He needs to take a fresh guard. He has to take a fresh guard and start his innings from zero. He's got to start as if he's on zero. And he's a seasoned pro, he knows it. Hats off to Nishil Mittal. We see a half century from his blade after quite a long time. He will be a happy man. The monkey is off his back with that half century. Definitely the monkey off his back now. What a fine knock. He's got to continue. That is nicely put into the deep point holdings. One more boundary, Cryptomania boundary. He's looking to turn the tide here.
96 for 2. The last over from Jugraj. And what a fantastic resurrection job this has been for Team Warriors. Nice to see that somebody like Nishil Mittal is putting his hand up and making his presence count. This is what cricket is all about, professional cricket. Every time you walk out to the wicket, you want to script a special story for yourself. He's writing his own story here, Nishil. This 50 has come after so much of time. He wanted this half century desperately, and now maybe still he can go on to add another 30, 40, more 50 runs. Maybe, you never know. He's got his eye in. Make hay while the sun shines. Bad form can be just round the corner. So when you are absolutely well set, you're watching the cricket ball like a football, try and make the most out of it. He's on to 59 already of 47 balls. Good partnership. Oh, no chance. Once it went past Parag Jain, it was going to be a Cryptomania boundary. The 100 runs up on the board for Team Warriors. Commit the hour, commit the man. That is the statement that is making Nishil Mittal. Will this night belong to Nishil? What an innings. Nice to see him being back amongst runs. It really makes me feel so happy. This partnership is worth 70 runs of 37 balls, and only 9 balls faced by the left-handed batsman Hardik Panchal. He scored only 8 out of those 70 runs. Smart cricket. Why would you want a risky run that can put your wicket under the scissor? Why should you run? End of the over, 103 for 2. End of Jugraj's spell. Team Warriors right back in the match. 8 wickets in hand, that tells you a story. The match in the balance at this stage, but in the post-drinks interval, the momentum has started to shift to the camp of Team Warriors. The first 10 overs, no doubt about the fact that they belonged to Team Superkings. But here they are clawing their way back in the match, Team Warriors, the momentum with them. Quite some cricket left to be played. Back into the attack, Ronak. Oh, what a big match player Ronak is. वार्म वेलकम टू कुलदीप सर, मैडम का भी स्वागत है. The bowling super sub back in the hit, that is Parag Jain. The old warhorse Nishil Mittal coming good. A very workaholic innings, very workaholic. All grit and determination, putting his mind to the job.
Kleptomania boundary, well timed. This man is on a roll here. He can do nothing wrong. Everything that he is touching is getting converted into gold. The boundary coming from Hardik. Oh, he's starting to get into the groove. He's played quite sensibly. He's got a chance here tonight and is making the most out of it, Hardik. Not a bad innings at all, but still he needs to spend more time at the wicket in the company of Mittal. Always clean bowled, the wrong shot selection ठीक नहीं था, जिसके चलते बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा. बहुत ही बड़ा विकेट हासिल हुआ है टीम सुपर किंग्स को. निशिल मित्तल को पेविलियन चलता किया है. शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज विकेट काफी मायने रखता है ये वाला विकेट. 52 बॉल्स 64. 10 चौकों के साथ बढ़िया इनिंग्स. ही विल कम टू ए स्टैंडिंग ओवेशन. काफी अरसे के बाद ये हाफ सेंचुरी निशिल मित्तल के बल्ले से निकली है. जिस तरह की इनिंग्स लगातार गत सीजन में निशिल खेल रहा था, अपने टैलेंट और पोटेंशियल को जस्टिस नहीं दे रहा था. आज की शाम बिल्कुल अपनी रंगत में आके, अपनी औकात पर आकर अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली है. और जब निशिल मित्तल जैसे प्लेयर्स उभर कर आएंगे, अपने बिल्कुल अपने हुनर को जस्टिफाई करेंगे, जस्टिस देंगे, तब जाके ये डीबीएस जीएससी T20 एक अगले स्तर पर जाएगा. नए बल्लेबाज उतरते हुए श्रीगोपाल जाजू. ये मंच बिल्कुल साझा हो चुका है श्रीगोपाल जाजू जैसे एक विस्फोटक बल्लेबाज के लिए. बिल्कुल अनुकूल स्थिति. फिर से एक बार करण पाजी का स्वागत है. कल का मैच टीम गैंगस्टर्स और राइजिंग टाइटंस का मैच 24 घंटों के अंदर 2500 से ज्यादा लोगों ने हमारा वो मैच यूट्यूब पर देखा है. और 2 दिन पहले का जो मैच था, 6500 लोगों ने 24 घंटों में उस मैच को देखा था. तो वो यूट्यूब पर जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल सर चढ़कर बोलता हुआ वनाशा. यस, गैंगस्टर्स ने एक अहम भूमिका निभाई थी. स्वागत है फिरकी गेंदबाज, गवर्निंग काउंसिल मेंबर, टीम चार्जर्स के ओनर विवेक भाई नरसरिया. रौनक सचदेवा की भी तारीफ करनी होगी, जो पहला ओवर किया था. मेरे ख्याल से इतना बढ़िया ओवर किसी भी स्पिन गेंदबाज की तरफ से इस टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला है. इतने अव्वल दर्जे की गेंदबाजी थी उस पहले 2 ओवर्स में, विशेष रूप में पहले ओवर में. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत होती हुई. जैसे रौनक अपनी करियर में आगे बढ़ेंगे तो उनका वो जो टैलेंट है, उनका जो अप्रोच है वो और भी सही होगा. Each and every match is a learning lesson, but he's got great potential. Ronak Sachdeva definitely has got the potential to be one of the best bowlers here in for Super Kings. He definitely is one of the key man. 111, the Nelson figure mark at the end of 15 overs. That Nelson figure mark always reminds me of the legendary English umpire David Shepherd. He used to take 3 hops. चाहे मेन अंपायर की पोजीशन पर हो या स्क्वायर लेग अंपायर की पोजीशन पर हो, जब भी वो नेल्सन मार्क होता 111, 222, 333, 444, 555, तब वो 2-3 बार अपनी जगह पर जंप करते थे, हॉप करते थे. और उनका ये मानना था कि वो जंप बल्लेबाज के लिए जो भी इल लक होगा, उस इल लक को दूर करने के लिए था वो वाला रिचुअल.
क्या लेजेंडरी अंपायर थे डेविड शेपर्ड, डिकी बर्ड। आज भी वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वो एटीट्यूड, अप्रोच आज भी बिल्कुल हमारे जहन में ताजा है। डिकी बर्ड जिस तरह से अपने पॉकेट में से हाथ निकाल कर वो उंगली खड़ी करते थे, वो दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते। डिकी बर्ड बहुत ही कम मर्तबा हैट पहनते थे या कैप। He always preferred not to put that cap or hat on. और तब वो न्यूजीलैंड में और जो फॉरेन कंट्रीज में वो 4-4:30 बजे जो मैचेस होते थे, एक अलग ही समा बनता था, एक अलग ही माहौल था। That was 25 years back. We used to get up early in the morning and switch on the TVs. Ramesh Kaluvitarna, Jay Surya, Mark Greatbatch, Gavin Larson, Chris Harris. वो अलग ही क्रिकेट था, काफी दिलचस्प क्रिकेट था, रोमांच भरा हुआ क्रिकेट था वो। बहुत ही बढ़िया गेंद और वो उंगली उठी है। थोड़ा सा हाफ हार्टेड शॉट खेला, कश्मकश में थे, टेंटेटिवली खेला, न आगे ना पीछे, और उस जद्दोजहद में अपनी विकेट को ये लेके एक सूझबूझ भरी पारी समाप्त होती हुई 111 पर। देखिए ये 111 का आंकड़ा अनलकी साबित हुआ है। पेविलियन में रुक करते हुए आर्किटेक्ट हार्दिक पंचाल, लेकिन जितना भी समय विकेट पे बिताया सूझबूझ से खेले, तो उनकी उस एफर्ट को सराहना करेंगे टीम वॉरियर्स। अच्छी साझेदारी निभाई, और वो जो नई गेंद के साथ जो पहले 15 ओवर्स में जो करारा क्रिकेट खेलने की जो प्रथा शुरू हुई थी, उस प्रथा को शुरू किया था मार्क ग्रेटबैच ने, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन। स्लैम बैंक क्रिकेट, और उस स्लैम बैंक क्रिकेट को आगे बढ़ाया रमेश कालुवितरना और सनत जयसूर्या ने। And then everybody started to play like that. कृष्णमाचारी, श्रीकांत उसी तरह का स्लैम बैंक क्रिकेट खेलते थे, और उनका अंदाज भी बिल्कुल अनोखा था। तकनीक को हमेशा किनारे रखते थे कृष्णमाचारी, श्रीकांत प्योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन और अपने नेचुरल टैलेंट पर निर्भर होते थे। और फिर तो वीरेंद्र सहवाग ने पूरी तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी का परचम फहराया। वीरेंद्र सहवाग ऐसे बल्लेबाज थे कि टेस्ट मैच में भी, फॉरेन कंट्री में जाकर भी पहली गेंद को स्टेडियम के बाहर मारने की क्षमता रखते थे। टेस्ट क्रिकेट में 2 ट्रिपल सेंचुरीज वीरेंद्र सहवाग के नाम है। नमन चावला नए बल्लेबाज। देखना है कि नमन चावला और श्रीगोपाल जाजू की ये जोड़ी किस तरह से कर्तव्य दर्शाती है, किस तरह से अपने बल्लेबाजी का हुनर यहां पर प्रदर्शित करते हैं। A true match winner, श्रीगोपाल जाजू। श्रीगोपाल जाजू एक ऐसा सीनियर क्रिकेटर है जो अपने करियर के इस मुकाम पर है, ऐसे पायदान पर है जहां पर उसे किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने टीम की नैया पार लगानी है, अपने क्रिकेट को एंजॉय करना है, बाहर जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करना है। उस वाले मुकाम पर है, उस वाले पायदान पर है। नथिंग टू प्रूव टू एनीबडी। बड़ा शॉट लगाने की तैयारी की थी, आखिरी वक्त पर अपनी मंशा को थोड़ा सा रोक के रखा, वरना बिल्कुल मन बनाया था मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को खेलने का। 114 रन 4 विकेट के नुकसान पर मेरे
बगल में है अब्दुल और रोशन, 2 स्कोरर्स, और इस तरफ है आकाश। और रोहित ने देखा कि थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे थे, चलकर खेलने की कोशिश की थी, अपनी गेंद की लंबाई को खींचा, बल्लेबाज को फॉलो किया, बिल्कुल सटीक गेंद, और पूरा सम्मान देते हुए गैप में खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया। नमन चावला अब स्ट्राइक पर, रन संख्या 115 रन, कम से कम 135 140 रनों की दरकार है। सुपर किंग्स एक बहुत ही अच्छी टीम है, उस लिहाज से वो 140 145 रन बनाना जरूरी है। आज की शाम रोहित सराफ ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके लिए एक बहुत ही अहम भूमिका क्रिएट हुई है, निभाने के लिए कहा गया है। काफी जिम्मेवारी है रोहित सराफ के कंधों पर, और इस टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए रौनक का ये ओवर शायद अब आखिरी ओवर होगा। अब तक 3 ओवर से करते हुए रौनक ने कितने रन्स दिए हैं? 11 रन दिए, 2 विकेट्स उनके नाम है। विकास लिंगा ने वो पैड्स निकाल दिए हैं, विकेट कीपिंग, शायद गेंदबाजी करने के लिए उतरेंगे। मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी बहुत बढ़िया करती है, अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड भी कर लेते हैं। सूझबूझ वाला ये सीनियर क्रिकेटर, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मल्टी फैसेटेड प्लेयर है, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। और T20 में 2 या 3 प्लेयर आपके पास इस तरह के हो तो फिर आपके दुश्मनों की शामत नहीं। काफी खुशगवार मौसम है, हमारे जॉगिंग ट्रैक पर जो फिटनेस एंथुसियास्ट अपना रूटीन कर रहे हैं, अपना रेजिम कर रहे हैं, वे भी इस अच्छे वातावरण और इस शानदार माहौल का लुत्फ उठाते हुए। नाइस एंड प्लेजेंट क्लाइमेट फॉर योर इवनिंग रिचुअल, द फिटनेस रेजिम, द परफेक्ट क्लाइमेट। इस तरह के क्लाइमेट में एक 2-3 एक्स्ट्रा राउंड्स चलकर बनते हैं, मे बी 2 एक्स्ट्रा राउंड्स एवरी इवनिंग इन दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट। खारिज किया उस अपील को। 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर, गेंद थोड़ी सी नीची रही थी, थोड़े से टेंटेटिव थे, सही किस्म का फुटवर्क न होने की वजह से वहां पर चारों खाने चित हुए। जाजू करारा शॉट, छोटी सी गेंद, सही अंजाम तक पहुंचाया। यही तो बात है इस तरह के सीजन प्रो की, मौका मिलते ही प्रहार किया और क्रिप्टोमेनिया चौका बटोर लिया। इस बीच good evening and a warm welcome to the flamboyant owner of team Super Kings, that is Mr. Jaydev Gupta. Yes, Mr. Jaydev Gupta has got a very interesting persona, very interesting man. Yes, Ashraf Bhai will have to sprint across. And yes, with his new look, Captain Abhay Vaidya will all be set to anchor the mid-innings. Yes, I'm sure he will be lining up his panel, and if the need be, I'll also pitch in. Big thank you to the cricket committee chairman Kaushik Bhai Mehta for the wonderful conceptualization of the season, and the right execution is on. Everybody is playing the role to perfection. Just look at the organizing committee. They are all pumped up.
Mr. Subbu, Amit Mehrotra, Manish Sharma, Shailesh Chadwa, Vinay Surana, Captain Abhay Vaidya, Monish Shah, Ravish Singhania, Yash Gadia, Raman Khatri, Prasad Karkera, Amol Polke, Pramod Kashyap and Amarkant Jain. That is the organizing committee assisting Mr. Kaushik Mehta. The backbone of the tournament, Mrs. Deepa Salvi, Mr. Darshan Mehrotra, Mr. Viraj Karandikar, Siddhant Wadekar, Yatish Kamulkar and Jitesh Lotankar. And yes, the GC members, Dr. Vinay Jain, the President, Sanjay Malu sir, the General Secretary, and Sunil Kabra sir, the Honorary Treasurer. Vinod Poddar, Pradeep Jain, Praveen Kothari, Mahesh Bang, Harsh Chandak, Bharat Gala, CA Pradeep Manka, PK Sablokji, CA Shilpa Lahoti, Rakhi Sonigra, Satish Agrawal, Dhaval Agrawal, C. Anil Agrawal, Lalit Jain, Chandrakant Agrawal, Ramakant Parasrampuria, Dr. Mukesh Agrawal, Tanvi Rao, Somil Shah, Vivek Nasaria and Jitendra Gupta. Those are the governing council members. It's a big thank you to them for their continuous support and patronage. All set for the play to be resuming. That is Sri Gopal Jaju on strike facing Ronak into his last over. Right up there in the block hole, 122. The last ball of the 17th over, the last ball of the spell for Ronak. 18 balls to come after this. A chance to get to the 150 run mark. Maybe, yes. A big possibility. Oh, that was fired in. Of the thickish inside edge, nothing much you can do about it. Jugraj is in hot chest, but the ball wins the race. Enough gas on it to go past the boundary line. Crypto Mania Web Series boundary takes the score to 126 at the end of 17 overs. 18 balls to come. Looking for that 30 runs. What a comeback it has been by team Warriors after the drinks interval. The first 10 overs went for 50 runs for 2 wickets. The first half belonging to team Super Kings in a big way. The second half, definitely the momentum is with the team Warriors. No doubt about it. No making two bones about it. Yes, to anchor the mid innings, it's going to be Captain Abhay Vaidya and the two panelists, Anil Dugar and Karan Singh Walia. So that will be the mid innings. A warm welcome to Mr. Ram. His passion is so infectious, Mr. Ram. We just love his love for the game. Pranit now being brought back into the attack. Maybe he will be bowling the 18th and the 20th over if everything goes to the script. Oh, that is up and away. A streakish boundary, not intentional, but welcome runs. He's got his hands on the hip, but yes, he needs to realize that he offered room. There was room on offer. No room for error, guys. You guys are looking to turn the corner here this tournament. As you play outside against better opponents, the A division, the B division, the job is cut out for you. There was room on offer, and it was begging to be hit away. And Sri Gopal Jaju obliged. Maybe not in such convincing manner, but that was room on offer. So this is what you got to learn as an upcoming bowler looking to establish yourself as a season pro. 130 for 4. Oh, what a super shot, man. Just look at the way he launched himself into that one. See, this was anticipation. He knew that that would be a short delivery. He knew that. He read the mind of the bowler there. Got into such a super class position. That's a Sejal Group 6.
What a super shot, man. किस तरह के शॉट को अपने पिटारे से निकाला है. He was expecting that kind of a delivery. He read the mind of Bane. This is what you got to do as a senior cricketer. This is what experience brings to the table. Just look at the timing and his bat speed, hand-eye coordination, raw talent. Absolutely gifted. Hearing that sound made everybody sit up and take attention to that shot. Now looking for the Yorker. That was well thought, and he is signaling himself. For the first time in the tournament, a batsman is giving the signal himself. Sri Gopal Jaju, Sejal Group 6. Oh, he's arrived big time here. He's arrived big time. He is turning the tide. He is making a big statement here. जैसे ही श्री गोपाल जाजू विकेट पे आए थे, मैंने बताया था कि बिल्कुल अनुकूल स्थिति है. ये मंच पूरी तरह से साजा है श्री गोपाल जैसे बल्लेबाज का स्वागत करने के लिए. अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉट फाइन लेग पर प्रितपाल सिंह भराज मौजूद. 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस 18वें ओवर में 2 गेंदानी शेष है. स्ट्राइक पर है नमन चावला. वो 160 रन अब नजर आते हुए क्या वापसी रची है. 50 रन थे 10 ओवर के बाद और अब तक 93 रन जोड़ दिए. पोस्ट ड्रिंक्स इंटरवल में 93 रन बन चुके हैं. थोड़ा सा जल्दी खेला अपने शॉट को, थोड़ा सा जल्दी कमिट कर गए थे. अगर वी में खेलते, इनसाइड आउट शॉट खेलते, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते, फुल फेस ऑफ द बैट ऑफर करते तो 4 रन से शायद मिल सकते थे. ब्लैकमेल कर रहा है. अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. स्वागत हार्य रन्स काफी महंगे साबित होते हुए बने इस ओवर में. सुपर किंग्स एक चैंपियन टीम है, हम सभी जानते हैं. बढ़िया टीम है, अच्छे मोमेंटम में खेल रही है. जब कभी एक थोड़ा सा सुपरस्टार प्लेयर न हो और वो एक बढ़िया इनिंग्स खेलता है, उभर कर आता है सितारे के रूप में, तो फिर वो हम सभी के लिए एक अच्छा माहौल बनता है और अपना ये लीग एक अलग स्तर पर जाता है. देखिए निशिल मित्तल ने आज कितनी अच्छी पारी खेली, फाइटिंग इनिंग्स खेली. पूरी तरह से अपने सक्षम कंधों पर वो जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार की. और सुपर किंग्स के लिए तो पता नहीं किस तरह का लक्ष्य इनफ हो सकता है, क्योंकि सुपर किंग्स जैसे चैंपियन टीम के सामने आप जितने रन्स बनाओ उतने कम होंगे, क्योंकि पता ही नहीं है आपको कि कितने रन्स बिल्कुल मैच विनिंग साबित हो सकते. 160, 180, 200, 220 क्या बनाए. सुपर किंग्स के पास वो काबिलियत है कि किसी तरह के लक्ष्य को भी तय कर जाए. सुपर किंग्स इज ऑलवेज one of the most exciting teams, and it will always remain a very exciting team. Shubhankar Joshi, the penultimate over. So he will get to bowl only 1 over in this match, and he's got to bowl a tight over. He's got to be miserly in this over. Maybe 7 to 8 runs, that's all he can afford to give away, nothing more than 8. You do not want to be going for more than 10 this over. That is what the captain has instructed him to do.
On this wicket, we have seen even 200, 210, 220 being chased down. People have scored more than 200 plus on 2 occasions. Batting second, two teams have scored more than 200 plus. One team has chased down the mountain and the second team almost crossed the mountain, almost reached the peak. So two teams batting second have scored 200 plus. So this is definitely chaseable when you look at the ammunition in the batting lineup of Team Super Kings. This promises to be a good match. A nice crowd is starting to assemble here, starting to gather. We all just need a fantastic match. Never mind which team wins the match, we want a cliffhanger. We always want the quality of the DBS Gsc, the standards for the DBS Gsc to go a couple of notches higher. What a terrific match we had the other night. Already almost 2,600, 2,700 views for yesterday's match on YouTube. That had gone miles into the air, miles and miles into the air. The ball was swirling. There is some breeze blowing across under pressure. Not an easy chance. You got to practice every day. You got to take at least 50 catches like this to take that catch. Oh, well, very well fielded. That was as straight as an arrow. Nicely driven downtown. Good bit of work. Saving 2 runs for the team. That was the carpet straight drive all along the ground. That was in the half. That was in his range. Driven downtown. 2 runs added. The score 151. 150 on the board. Oh, that is such a clean strike. And that goes out of the park. Not easy to dispatch that kind of a low full toss. Well timed, got the desired elevation and puts the ball out of the park. Sejal Group 6 takes the score to 157. This man is on a roll here, Sri Gopal Jaju. Well bowled. And the comeback delivery after a boundary or a 6 is very important for a bowler in a T20 game. That reflects his attitude, his approach, his mental frame up. The delivery that you bowl after being hit for a boundary or a 6 is a very important delivery. That will really signify your character. That will reflect your approach. So well bowled on that count. Oh, well timed. He launches himself into it. Just look at the momentum he gathered with that incredible bat speed. Good hand-eye coordination, pure talent. Talent personified, that is Sri Gopal Jaju. With that, Sejal Group 6, the score on to 161. He's entertaining the crowds here big time. What an innings this has been from Sri Gopal Jaju. Oh, that's a boundary, Cryptomania boundary. We've confirmed it.
17 balls and he is on to 40. What a cameo. Incredible batting. He's provided that much record impetus. He's so unassumed. जब वो विकेट पे चल के आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये एक साधारण प्लेयर है, लेकिन यहीं पर तो ओपोनेंट से फंस जाते हैं. क्या बल्लेबाजी की है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार नॉक. जुगराज मेहता को पता है कि कैरेक्टर वाला कमबैक किया है यहां पर. टीम वॉरियर्स ने फाइट की, बड़ी शिद्दत से खेले हैं और अब ये द गेम इज ऑन, कुड बी एनीबॉडीज गेम. ये बहुत ही दिलचस्प सेकंड हाफ होगा, बहुत ही दिलचस्प. बेताशा चुनौतियों का सामना करना होगा टीम सुपर किंग्स के स्टार लाइनअप ने. अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, कयामत की शाम होगी. क्या मोमेंटम बिल्ड किया है, विपरीत परिस्थिति को बिल्कुल अनुकूल स्थिति में परिवर्तित किया है. वाइड गेंद, 162 रन. एक 162 में 14 एक्स्ट्राज है, 12 वाइड और 2 लेग बाइस. सम्मानजनक है ये वाइड रन जो दिए है. बढ़िया गेंद, यॉर्कर करने की कोशिश की थी और बल्लेबाज के नजदीक गेंद को रखा था ताकि वो एलिवेशन न मिले. थोड़ा सा और ज्यादा फुल लेंथ डिलीवरी करने की कोशिश की थी वहां पर नमन चावला. इस इनिंग्स की आखिरी 5 गेंदानी बाकी है. ओ जबरदस्त थ्रो प्रीतपाल सिंह बराज का. ना कहा अंपायर ने, थर्ड अंपायर की दिशा में रुख किया है. Captain Abhay Vaidya. We have 2 people to assist the captain just in case if it's a touch and go, and it is Shailesh Chadwa. But yes, the third umpire official it is Captain Abhay Vaidya. We will play it on screen for you. Okay, just not to let the time waste. It is not out. As an insurance. क्या जबरदस्त कैच लिया है, कितना आसान तरीके से उस कैच को लपक लिया. हालांकि वो कैच इतना आसान नहीं था. ही मेड इट लुक इजी. शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज विकेट. एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेलकर पेविलियन लौटते हुए श्री गोपाल जाजू बड़ा योगदान किया है. रंगत में आकर उजागर होकर
अपनी औकात पर खड़े उतरकर एक अच्छी पारी खेलकर अपनी टीम की नैया पार लगाई, एक सम्मानजनक स्थिति में ले जाने में बिल्कुल सफल रहे। कैरेक्टर वाली इनिंग्स थी ये, आज काफी कैरेक्टर दर्शाया, शुरुआत में निशिल मित्तल ने और फिर श्री गोपाल जाजू ने। लेकिन आज सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे तो हम निशिल मित्तल की, फाइटिंग इनिंग्स खेली, उस लॉन्च पैड को स्थापित किया ताकि श्री गोपाल जाजू जैसा प्लेयर विकेट पे उतरे, अपना स्वाभाविक खेल खेले। पहला हाफ वाज टू बिलोंगिंग टू सुपर किंग्स, बिग टाइम, जबरदस्त गेंदबाजी की थी, शिकंजा कसा था। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, टीम वॉरियर्स ने जबरदस्त क्रिकेट खेला। आलम यह है कि किसी के भी पक्ष में यह मैच जा गिर सकता है, इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल। मोमेंटम जैसे ये इनिंग समाप्त होगी, ये वाला ओवर समाप्त होगा, मोमेंटम बना रहेगा वॉरियर्स के पक्ष में। That catch was taken by Shubhankar, well done. The new man in Vicky Goenka. The final 3 balls, 163. Oh, that is well played, and the ball is traveling like a tracer bullet, well timed into the boundary holdings. Cryptomania boundary, welcome runs being added here. They are on a roll. There is a spring in the stride. एक नव चेतना के साथ खेलती हुई नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक 153 रन गति में परिवर्तन किया, सोच अच्छी थी, इंटेंट अच्छा था, लेकिन ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाए। एक एक्स्ट्रा रन मिला, रन संख्या 168 रन, यानी कि अब तक 118 रन्स बन चुके हैं। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद वाले खेल में गेंदबाजी बाकी है। किसने सोचा होगा कि ये आखिरी 10 ओवर्स 120 रन्स के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर पाना चुनौती होती है। बहुत ही आला दर्जे के प्लेयर माने, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। जब कभी वो भाने ब्रदर्स खेलते, देयर इज अ सर्टेन बज इन द एयर व्हेन द भाने ब्रदर्स आर प्लेइंग. One is a spinner, the other one is a medium pacer. Both the players are handy batsmen, exciting players, good potential, very talented, the Bane brothers. And yes, Karan Singh Wali and Anil Duggar now gearing up for the mid-innings session, and to anchor it, it's going to be Captain Abhay Vaidya. Oh, very well kept, very well kept, well kept. 20 overs, 174-5, यानी कि करण पाजी और अनिल दुग्गर जो मिड इनिंग्स करने वाले हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आखिरी 10 ओवर्स में 120 रन जोड़े हैं। जहां तक टीम वॉरियर्स की बात करें, वो स्टार परफॉर्मेंसेस थे निशिल मित्तल के बल्ले से और श्री गोपाल जाजू, और इसने एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। रौनक ने, जुगराज was steady. रोहित सराफ gave such a good account of himself, वो पोटेंशियल दर्शाया। प्रणीत ने थोड़ी सी आखिरी लम्हों में कुछ एक्स्ट्रा रन्स दिए। तो कुल मिला के इसके पहले के कमर्शियल ब्रेक शुरू हो, मिड इनिंग्स शुरू हो, इस मैच को जीतने के लिए 171 रन्स बनाने होंगे। 171 to win the match of 20 overs
time for the commercial break. Over to Akash Singh and team Pramod Kashyap. दरबार ये गंगा राम का है, यहाँ जो मांगो वो मिलता है। दरबार ये गंगा राम का है, यहाँ जो मांगो वो मिलता है। यहाँ जो मांगो वो मिलता है, किस्मत का ताला खुलता है। दरबार ये गंगा राम का है, यहाँ जो मांगो वो मिलता है। दरबार ये गंगा राम का है, यहाँ जो मांगो वो Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the mid-innings of this match between Team Superkings and Team Warriors. And I have with me two excellent panelists today. On my right is Mr. Karan Singh Walia, and right next to him is Mr. Anil Duggar. Yesterday, both were on the opposite sides of the field in one of probably the closest matches of this tournament. And today, they're sitting right next to each other, discussing what happened in the first innings of this game. As we all know, Team Warriors lost the toss. They were put into bat. And now they've set a target of 170 runs for Team Superkings. Karan Paji, what is your analysis of the first innings? How do you think it went for Team Warriors? एक्चुअली टीम वॉरियर ने अच्छा खेला है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये जो विकेट है ये विकेट ऑलरेडी टूटा हुआ है और इस पे सेकंड इनिंग के बाद टर्न भी होना चालू होगा। आप देखेंगे रौनक सचदेवा ने बॉल डाली, बॉल टर्न हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली जुगराज वो टर्न को कैपिटलाइज नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था। थोड़ा तेज डालने की कोशिश कर रहे थे हवा में, इसको थोड़ा स्लो डालते तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है उन्हें विकेट मिल सकती थी। अदरवाइज जुगराज जैसे बॉलर को इस विकेट के ऊपर विकेटलेस जाना ये बॉलर की गलती है। सामने वाले लोगों ने कैपिटलाइज किया, अच्छा खेल के गए हैं। मेरे को ऐसा लगा कि ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है मीत वखारिया जो लास्ट मैच में भी अच्छा डाल के गया है। आर्यन पटनी बॉल को स्लो रखते हैं, वो नमन चावला को आज यूज कर सकते हैं लेग स्पिनर को। और आज मुझे पहली बार ऐसा लगा इट इज वॉरियर वर्सेस सुपर किंग। अदरवाइज हमेशा ऐसा लगता है आर्यन वर्सेस सुपर किंग, आर्यन वर्सेस ग्लैडिएटर, आर्यन वर्सेस चैलेंजर। जब हमने 240 भी चेज होते देखा तो वो आर्यन वर्सेस चैलेंजर था, इट वाज नॉट वॉरियर वर्सेस चैलेंजर। तो आज हमें एक्चुअली मैच देखने को मिलेगा जिसमें वॉरियर वर्सेस सुपर किंग है, एक टीम दूसरी टीम के साथ खेल रही है, ना कि एक प्लेयर 11 प्लेयर के साथ खेल रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। राइट अनिल भाई, और जैसे हमने देखा कि काफ़ी स्लो शुरुआत रही टीम वॉरियर्स की जब हम देख रहे थे, और ये पिच जो आज यूज़ हो रही है ये थोड़ी स्लोअर साइड पे है, इस पे टोटल्स भी थोड़े कम बन रहे हैं और एक अच्छी स्टार्ट की शुरुआत की ज़रूरत थी टीम वॉरियर्स को, बट अर्ली विकेट्स लूज़ किए। उसके बाद निशिल मित्तल ने आके इनिंग्स को संभाला। आपका क्या इसमें कहना होगा? विकेट्स थोड़ा स्लो तो हो रहा है डेफिनेटली, बट 10 ओवर में 50 रन थे सिर्फ, और उसके बाद लास्ट 10 ओवर में 120 रन बनाए हैं। तो अच्छी बैटिंग करेंगे और अप्लाई करके करेंगे तो रन बनेंगे, और बॉलर को एग्रेसिव अप्रोच से खेलेंगे। अगर बाउंड्री नहीं, सिंगल डबल पे अटैक करते रहेंगे, कंटिन्यूस पॉजिटिव अप्रोच से खेलेंगे तो रन बनते हैं। और 170 रन का जो इन्होंने टारगेट दिया है, जो इन्होंने कमबैक किया है 10 ओवर्स में, निशिल ने अच्छी बैटिंग की, फिर जाजू तो जैसे जाजू खेलता है वो जाजू ही खेल सकता है,
कुछ 17-18 बॉल में 40 रन बना दिए हैं। और बाकी जितने भी बैट्समैन लास्ट 10 ओवर में खेले हैं सबने सपोर्ट किया है, सबने 10-15 रन बनाए हैं। तो ये टीम एफर्ट है जो इन्होंने 10 ओवर में, लास्ट 10 ओवर में जो 120 रन बनाए हैं, और बहुत अच्छा कमबैक किया है वॉरियर्स ने। आई थिंक ये दूसरी टीम्स के लिए भी एक सीख है कि ये पिच भले ही स्लो हो, लेकिन अगर आप जम के खेलें, आप वहाँ पे टिक के खड़े रहें, तो रन बन सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड लेसन फॉर द अदर टीम्स टू टेक व्हाट वॉरियर्स डिड टुडे, एंड वी ऑल नो दैट जाजू हैज अ swashbuckling innings in him every other game, and that's what he showed today. However, if we talk about the bowling of Team Super Kings, I think they started well with Rohit Saraf, 4 overs, 20 runs for 1 wicket, and then first change Ronak Sachdeva, 4 overs, 22 for 2 wickets. So they really started well, and they had the match in their grips, but then they lost their way. देखो रोहित सराफ जो है ना, ही इज आइसिंग ऑन द केक फॉर टीम सुपर किंग. जिस ढंग से वो आते हैं कंसिस्टेंटली, मतलब उनको सिक्का रख दो तो सिक्के पे बॉल डालते रहेंगे. कंसिस्टेंटली टप्पा पकड़ के वहीं से सीधी बॉल डालते हैं, वहीं से बॉल बाहर निकलती है. और आपने देखा होगा उनकी 2 बॉलें बैट्समैन को, जब साकेत बैटिंग कर रहे थे, एकदम इंटरनेशनल लेवल की बॉल थी. बॉल आई, बैट्समैन को लाइन में लिया आगे, और बॉल सीधी होकर निकल गई बाहर. तो मतलब रोहित सराफ इज एन एसेट फॉर दिस टीम, और वो कंसिस्टेंटली लास्ट 4 मैचों से अच्छा डाल रहे हैं. और मेरे को नहीं लगता किसी भी मैच में वो एक्सपेंसिव हुए. उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया. और रौनक सचदेवा एक बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो टप्पा पकड़ के बॉल डालता है, और धीमा बॉल डाल रहा है, बॉल टर्न हो रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे डाल रहा है, और सामने वालों को फुटवर्क करने के लिए या उसे क्रॉस मारने के लिए मतलब उकसा रहा है कि आओ भाई, तुम्हारे में दम है तो मुझे मारो, मैं तो डाल रहा हूं तुम्हें. और फंसा रहा है बैट्समैन को अपने जाल के अंदर, और अच्छा डाल के जा रहे हैं. बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा उनके जो बाकी के बॉलर हैं उन्हें थोड़ा उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा. आई वॉज वेरी सरप्राइज. पराग ने अच्छा 1 ओवर डाला, उसे 1 ओवर और देना चाहिए था. नहीं तो हम प्रितपाल से भी 1 ओवर देख सकते थे. इसमें 10 रन कोई बड़ी बात नहीं होती. ऐसे बॉलर कभी भी आके मैच सेव कर सकते हैं, रन सेव कर सकते हैं. फास्ट बॉलर के साथ इतना ज्यादा प्रसिस्ट करना मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ये टर्निंग पिच है, तो इस पे जबरदस्ती आप फास्ट बॉलर को डला रहे हैं. तो आपने देखा प्रणीत को भी उन्होंने काफी अग्रेसिवली खेला, और रन बने. उस 1 ओवर में 21 रन बने, लास्ट ओवर में भी रन बने. ये ट्रैक के हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए था. आई थिंक कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई कैप्टन की. ये जितना इस ट्रैक के ऊपर आप को विकेट को स्लो करते, गेम को स्लो करते, रन उतने कम होते. राइट. और हम जानते हैं प्रितपाल भी है इस बॉलिंग लाइनअप में, जो आई थिंक इनके सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, एंड उनके पास स्लोअर वन और मिक्स डिलीवरीज काफी है, तो उसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छे से यूज कर सकते थे. प्रितपाल इनके नहीं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं. ये अकेले बॉलर हैं जिन्होंने 7 विकेट लिए हुए हैं, तो इनको तो मैं 7 बार नमन करता हूं. चलिए आइए आते हैं अभी वॉरियर्स की बॉलिंग लाइनअप पे. वी नो टुडे दे आर मिसिंग क्वाइट अ फ्यू ऑफ देयर की प्लेयर्स. In fact, as Paji rightly pointed out, Aryan Patni is missing today. Their old warhorse Vijay Singh is not playing, and they'll also be missing the left arm pace of Darshan Gala today. So with this bowling lineup, क्या लगता है आपको, क्या chances है टीम वॉरियर्स के, क्या strategy अपनानी चाहिए उनको? So, ये 3 बॉलर जो है, ये इनके 3 प्रीमियर बॉलर्स रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट. Aryan, Vijay, and even Darshan Gala. So they have been their premier bowlers. So they will definitely miss them. But I think it is an opportunity for other bowlers to come up and show their talent and take their team through. So टैलेंट है अभी भी बॉलिंग में, काफ़ी टैलेंट है इनके पास. सबसे पहले तो राजेश पटनी खुद है. राहुल गाला है जो नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. फिर मीत वकारिया जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट. और आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है नमन चावला के लिए है. तो अपॉर्चुनिटी, अगर ये बॉलर्स इसको फियर नहीं लेके अपॉर्चुनिटी समझ के खेले कि ऐसा मौका इनको बार बार मिलेगा ना, जब इनके 3 मेन बॉलर्स आ जाएंगे तो इनमें से 1-2 बॉलर को डेफिनेटली बाहर बैठना पड़ेगा. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर टैलेंट. राइट. एंड हमने देखा नमन चावला बैटिंग के दौरान भी काफी देर तक फील्ड पे थे. सो आई थिंक ही हैज गेज्ड द पिच बेटर देन the other bowlers because he has batted there for so long. So but to depend on Rajesh Patni, I think his 4 overs will be crucial, but will it be enough? देखो क्या है ना कि आप 12 ओवर के साथ सुपर किंग जैसी टीम के साथ मैच नहीं जीत सकते. सुपर किंग अपने आप में मैच विनर टीम है. बहुत बड़े बैट्समैन है. चिंतन शाह है, आज वो मिकी मोदी को भले मिस करेंगे, बट जुगराज है, विकास लिंगा है, रौनक है, प्रणीत बाने है. इनके पास बहुत बड़ी डेप्थ है बैटिंग लाइनअप में. और आप 3 बॉलर के साथ ये सोचेंगे कि आप 170 को डिफेंड करेंगे, मुझे नहीं लगता डिफेंड कर सकते हैं. हो सकता है मीत वकारिया आए 2 विकेट लेके जाएं, आर्यन पटनी की जगह उनके आज पापा पटनी 2 विकेट लेके जाएं, राहुल गाला अच्छी बॉल डालें जैसे रोहित सराफ ने डाली. बट बाकी के 8 ओवर का क्या करेंगे आप?
वो 8 ओवर ही हैं, जो 8 ओवर आपको 80 रन भी लगवा सकते हैं, वो 8 ओवर 100 रन भी लगवा सकते हैं। तो वो 8 ओवर बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। हेलो, वो 8 ओवर बहुत ही क्रूशियल रहेंगे इस विकेट के ऊपर कि कैसे ये विकेट खेलता है और कैसे टीम वॉरियर अपने लड़कों को मैनेज करती है, बॉलर्स को मैनेज करती है। और मुझे आज एक एक्स्ट्रा चीज लग रही है कि उनके बॉलर से ज्यादा उनके फील्डर्स को 200% खेलना पड़ेगा, क्योंकि 8 ओवर में रन बचाने हैं। ये 12 ओवर में तो चलो अच्छे रन बचा भी सकते हैं, बट 8 ओवर में मार पड़ेगी। आपने देखा डीजे बॉलिंग करने आए धनंजय, तो उनको 1 ओवर में 21 रन पड़े, तो वैसे ही उनके बॉलरों को भी पड़ेंगे जो नए लड़के आएंगे। तो मतलब ये स्टेज सेट नहीं है। हम सोच रहे हैं नमन चावला की बॉडी गर्म है, बैटिंग करके आ रहा है, वो बॉडी गर्म है, जो अंदर जा रहे हैं लड़के वो पूरे गर्म है। वो नमन चावला को देख के डबल गर्म हो जाएंगे, भैया नमन चावला आ गया, इसने किसी मैच में बॉलिंग नहीं डाली है, इसको हम कवर पे छक्का मार देंगे, एक शॉर्ट बॉल डालेगा मिड विकेट पे छक्का मार देंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है वो 8 ओवर में सुपर किंग का पलड़ा भारी है। अगर सुपर किंग को मैच कैपिटलाइज करना है तो उनको इनके अर्ली ओवर सी थ्रू कर देने चाहिए, जैसे वॉरियर ने रोहित सराफ को सी थ्रू किया शुरू में कि हाँ भैया आप अच्छा डाल रहे हैं, हम आपसे इज्जत दे रहे हैं, आप जाइए डाल के बिना विकेट के, आप भले 5 के रन रेट पे जाइए। बट उन्होंने बाकी जो बॉलर आए उन्हें छोड़ा नहीं है। तो सेम आज मेरे को लगता है सुपर किंग की भी अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ जी राहुल गाला जी आप आए हैं, आप अच्छी बॉल डाल रहे हैं, पिछले 2 मैचों से हम देख रहे हैं आपको, आपकी बॉल पड़ के बाहर भी जा रही है, आप सीधी बॉल भी डाल रहे हैं, एक आधी बॉल अंदर भी आ रही है आपकी, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं आपको हम खेल के निकालेंगे। और बैट्समैन के लिए बेस्ट ट्रिक क्या होती है, जब बॉल नहीं मालूम पड़ रही कि बॉलर क्या डाल रहा है, तो आप अंदर वाले के लिए खेलिए। स्टीव स्मिथ का सबसे बड़ा मतलब मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसने हमेशा यही कहा है कि जब मुझे बॉल नहीं समझ आ रही, मैं सिर्फ अंदर वाली बॉल के लिए खेलता हूं, मैं बाहर वाली बॉल के लिए खेलता ही नहीं हूं, अपनी विकेट बचाने के लिए, अपने आप को एलबीडब्ल्यू से बचाने के लिए। तो अगर राहुल गाला को उस ढंग से खेल के जाएगी टीम सुपर किंग, तो मुझे नहीं लगता कि ये चेस कोई बड़ा है। बट विकेट ट्रिकी है। स्पिनर ये जो दोनों है राजेश पटनी और मीत वकारिया, बड़े कंजूस बॉलर हैं, बड़े कड़क बॉलर हैं, विकेट पकड़ के बॉल डालेंगे। और आप देखेंगे कि राजेश पटनी कंटिन्यूसली वो स्लो से भी स्लो स्पीड पे उनको ऑफ स्टंप के बाहर काटने के लिए मजबूर करेंगे कि काटिए काटिए काटिए, और उसमें ही एज लगती है, हमने देखा है उसमें ही एज लगती है। और वो 2 पॉइंट खड़े होंगे, बैकवर्ड पॉइंट, और वो दोनों फील्डर बहुत अच्छे होने चाहिए कैच पकड़ने के लिए, बाउंड्री सेविंग करने के लिए। Right, or Anil bhai, let's not forget they have Nishil Mittal also, who will be high on confidence after scoring a 64 out there today, which he's gotten a 50 after a very long time. So he'll be raring to go to bowl as well. So let's hope that he carries that confidence while he's bowling. But putting you on the spot, Anil bhai, क्या prediction रहेगा आपका इस game के लिए? It's a tough one. 170 is a very tough one to put one side in front. Everything depends on the first 10 overs and how many wickets they keep intact in their first 10 overs. And as Karan rightly said, it is important that they play out good bowlers with intelligence. Rather than going berserk after every bowlers, they have to select their bowlers to whom they have to target the bowlers and try to achieve most runs from those bowlers. So I think it is very difficult to predict, but since we have to predict over here, I think with the kind of batting Super Kings has been doing, they have been flamboyant, they have been aggressive, and they have a deep batting lineup. I think they will scrape through this one. It will not be easy, but I think they will scrape through. करण पाजी आपका प्रेडिक्शन? 170 इस विकेट पे आसान नहीं है, बट सुपर किंग फेवरेट है, अच्छा खेल रहे हैं, टीम में बैटिंग की बहुत डेप्थ है। चिंतन शाह, विकास लिंगा, रौनक सचदेवा, जुगराज मेहता, उसके बाद भी जो लड़के आते हैं, हमने देखा डीजे जैसे लड़के, उनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो भी अच्छी बैटिंग करता है, प्रणीत भाने हैं, उत्सव अग्रवाल है, तो मतलब बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। इस समय मेरे हिसाब से टीम सुपर किंग फेवरेट है, और अगर वो अपने आप को अप्लाई करेंगे, पहले 4 ओवर अच्छे खेल के निकालेंगे बिना किसी लॉस के। मेरे हिसाब से इस विकेट के ऊपर हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं लास्ट 20 मैचेस से, पहले 4 ओवर मैटर नहीं करते, आप 4 ओवर में चाहे 70 रन बनाइए, 4 ओवर में 20 रन बनाइए, ये विकेट 10 ओवर के बाद बहुत हल्का हो जाता है। आप देखिए कंसिस्टेंटली हर टीम लास्ट के 10 ओवर में 80 से 120 रन बना ही रही है, तो ये विकेट 10 ओवर के बाद बहुत हल्का हो जाता है, बॉल बैट पे आने लगता है मीडियम पेसर का। अनफॉर्चुनेटली एक चीज वॉरियर के पाले में भी जा रही है, उनके पास अच्छे मीडियम पेसर सिवाय राहुल गाला के नहीं है, तो ये विकेट को और स्लो कर सकते हैं, मैच को लंबा लेके जा सकते हैं। जितना मैच को स्लो करेंगे उतने फेवर में उनके भी जा सकता है। अगर टीम सुपर किंग लास्ट के 8 ओवर जो उनके डालने हैं उसे कैपिटलाइज कर गई, तो ये मैच सुपर किंग को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज दिस इज ए वन साइड गेम। मेरे हिसाब से पहले 4 ओवर देख के निकाल देने चाहिए। इस टाइम सुपर किंग फेवरेट है, माई मनी इज ऑन सुपर किंग।
All right, ladies and gentlemen. So as we've seen, our panelists are putting Team Super Kings. सर आपके पैसे किस पे लगे हुए हैं? सर आप अपना भी बताइए ना, आपको क्या लगता है? Batting depth देख के I also think that Team Super Kings is odds on favorite. आपको क्या लग रहा है रौनक सचदेवा के अगेंस्ट इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वॉरियर्स की? Well, it's very difficult to have a strategy against Ronak because he's playing for his first season here. So I don't think they'll have worked too much on him. और आप देख रहे हैं विकास लिंगा कंसिस्टेंटली लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उसके बारे में? पहले मैचेस में अच्छा खेल चुके हैं तो कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे और आई थिंक उसी कॉन्फिडेंस से ही विल स्कोर सम रन्स तो आपके पैसे भी सुपर किंग के ऊपर हैं? जी बिल्कुल। तो ठीक है, हम जीतने के बाद तीनों एक साथ पार्टी करेंगे ब्लू के अंदर सर। सी यू टुमारो। Thank you so much, ladies and gentlemen, and very soon we'll be coming back with the second innings of Team Super Kings versus Team Warriors. Thank you.
Hello. Yes, there you go. The two pretty ladies, Sanjana Yogesh Kotak and what's her name? Tanishka Kotak, yes. Having that new white ball, handing over to the umpire. Thank you, madam. So yes, the second half getting underway. 171 runs to win the match. Very interesting second half getting underway. As the panelist mentioned that in spite of that challenging target to be chased down, they would put their money on Team Super Kings is the call from the three panelists. It's not going to be easy. It's going to be a test of character. What will be the most important thing here is the kind of start that the opening batters, the top order batters of Team Super Kings provide to their team. They've got good depth. And yes, Rahul Gala starting to bowl from Chintan, the man on strike, and Jugraj at the non-striking end. 171 runs to win the match. It's going to be Rahul Gala, the seasoned pro, to open the bowling proceedings from the DBS Pavilion end. Time to thank the title sponsor, the Development Bank of Singapore, for coming on board as the title sponsor of the DBS Gsc T20 League 2023-24. Thank you to the associate sponsors, Shakti Plastic Industries, Wicket Cryptomania, KCD, K. Talsania Construction, and the Sejal Group. Chintan Shah, Jugraj Mehta, the openers, playtime. Into the stumps, given the due respect, is not looking to bowl fast. He will be putting all the onus on landing the ball in the right area. A very seasoned bowler, Mr. Consistence.
You might call him Mr. Reliable as well. And the ball climbing into him, nicely put away. A man in hot chase. That goes past him. The first Cryptomania boundary coming in quite early. A morale booster shot there. That was climbing into Chintan. That landed on the seam and came in big time. Nicely getting into a position. Just steering the ball into the gap. Not looking to hit the ball too hard. Pure timing. That will take his confidence skyrocketing. Up and away is Chintan and Superkings with that Cryptomania boundary. Yeah, with the line that Rahul Gala bowls, that man in that deep gully and the backward point area will have to be very alert. Everybody at the time of the mid-innings was mentioning that this will be a close match. And looking at the depth of Team Super Kings, they will put their money on Team Super Kings. Is what the two panelists and the anchor mentioned. Oh, what a shot. Super timing. Stand and deliver stop. This is the class of the man. Not a bad delivery, but pure timing. That is a classic shot. Stand and deliver, not bothering to move his feet. That is the confidence of the man. Cryptomania boundary. The two Cryptomania boundaries will put some pressure on Raga. The ball stopping and coming into him. He is in discomfort. He's got to be careful because this is a long season and he does play the B division. Very important matches coming up. This is also a very important match because the owner has invested big bucks on you. One of the icon players. Oh, that is a drop catch. That should have been taken. He judged it to perfection. Nicely got under the ball. What can a bowler do now? He created the opportunity. That was a false shot. Fortunately for Jugraj, he still remains at the wicket to fight another day. Score at the end of the first over, 11 for no loss. पूरी तरह से सुपर किंग्स के खेमे में दिल हलक में था. कैच छूटा, दिल रूठा यहां पर टीम वॉरियर्स के कैंप के लिए. उस इंजरी के चलते संघर्ष करते हुए, लेकिन क्योंकि अब विकेट पे उतरे ऐसे हालात में बल्लेबाजी करने के लिए, तो फिर बल्लेबाजी करनी भी होगी. इस लेवल पे इस तरह के प्लेयर के लिए, प्रोफेशनल प्लेयर के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है. आप अंदर आए तो फिर खेलना है. बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है. हम जाते प्योर रॉ टैलेंट है जुगराज. हम हमेशा जुगराज जैसे नेचुरल प्लेयर्स को बैक करते हैं. Yes, he's looking to break into that league of the top 4 players at the GSC. Definitely he's in the first 7-8, but he's looking to go one notch higher to get into that top 5 scenario. Yeah, for each and every young gun, the talented and the accomplished player, the dream is to get into the first 5 at the GSC.
Amit Wakaria. Oh, what a shot! He gets stuck into it big time. And that has gone at least 85 meters into the stands. What a shot, effortless shot, maximum result. That was angled in, that was tossed up, and this man obliged in true fashion. What a shot. Morale booster. After that drop catch, this 6, so it is adding salt to the injury. A big Sejal Group 6. Big one. That's a biggie. Monster hit. That's a monster hit. Takes the score to 17. That will ease the tension in the camp of Super Kings. That will make Jugaraj feel much, much better. He's got to forget that hand. He's got to do the job now. Man in that sweeper point area. Amit Wakaria, I have been hearing so many good things about Amit Wakaria from all the senior cricketers. So yes, obviously he's got the talent. One of the most talked about young spinners at the GSC, that is Amit Wakaria. Every time a young left arm round the wicket spinner comes on the horizon, we all are interested. We all get excited. At the end of the day, we all are here to watch good cricket. That is what we love the most, high quality cricket. And that is why everybody turns up in such good numbers for every match. The only ingredient that we want is a good dish of cricket. Well bowled, not afraid to toss the ball up, and that is the USP of Amit Wakaria. If you take those flighted deliveries out of his armory, he will be an ordinary bowler. That is his strong point, the USP. So he's got to stick to those pet deliveries, the stock deliveries. He cannot be afraid of one or two big shots hit off his bowling. A few bad chapters do not mean that your story is over. Oh, how did it miss the stumps? How did it miss the stumps? That was the wrong shot selected to play. He should be thanking his lucky stars that is still there at the wicket. It's all in the mind. Up here, up here. What you have inside up here is, that is more important. Big opportunity for Chintan, big one. For any top order batsman, especially an opener, you need one good knock of say 60-70 runs to be up and away. Once you get the confidence going, you are a different man. So that big knock under your belt can be that morale booster. Just look at Kunal Bowser, that the big century and then followed up by a 60+ innings. Look at Shashwat, look at Aryan Patni, look at Vedant Gadia. You do not have to look far away. Just look at the top players at the GSC. Try and take a learning lesson from the big players. Just look at Nishil Mittal tonight. He was so good today. He gets that half century after such a long time. Shailesh, कितने लंबे अरसे के बाद ये सेंचुरी देखने को मिली. Just what the doctor ordered, पूरी तरह से फ्रेश होंगे अभी सीजन में उस हाफ सेंचुरी के बाद. एक अलग निशिल मित्तल देखने को मिलेगा. रागा को हमेशा हमने उस नई गेंद के साथ ही गेंदबाजी करते हुए देखा है. रागा कह लो, आशीष सिरोया कह लो, सौरभ लोहिया कह लो, ये सभी नई गेंद के साथ ही इफेक्टिव होते हैं.
चलिए 4 रन मिले आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खींच के खेल दिया क्रिप्टोमेनिया चौका। देखिए जो 7-8 प्लेयर्स शैलेश जो हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में जो ए डिवीजन बी डिवीजन खेलते हैं और हम ऐसी प्रार्थना करते कि मुंबई के लिए खेले आगे जाकर, इन लोगों ने तो कंसिस्टेंटली 50-50 रन मारने हैं। ये क्लास है जुगराज का, ये जुगराज की काबिलियत है, ये उसकी हैसियत है, ये हैसियत रखता है जुगराज मेहता। सेजल ग्रुप 6 रनों के साथ रन संख्या 28 रनों पर। वो जब जुगराज इस तरह के मूड में है तो सुपर किंग्स से खेमे में भी टेंशन देता है कि पता नहीं ये कब क्या कर लेगा किस मोड पर। लाजवाब प्लेयर। ओ बाहरी किनारा लेकर गेंद वहां पर कैचिंग पोजीशन में, देखिए कैचिंग पोजीशन में भी नहीं था, वो काफी पीछे था। बढ़िया गेंद रागा की, बाहरी किनारा लेकर गेंद जस्ट शॉट। यस, स्लीप के ग्लैडिएटर्स के टीम ओनर निखिल पटेल का तहे दिल से स्वागत है। फील्डर मौजूद है। ओ माय, ओ शायद वो गेंद सर पे लगी है। फिजियो आपको तुरंत जाना होगा, मे बी ही विल। जाजू आर यू श्योर? वो अभी पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद। मे बी यू शुड टेक सम आइसिंग मैन, ऑलरेडी यू आर इंजर्ड। Oh, that could have been lethal, you know. That could have been very bad, Jaju. Fortunately, and अभी पता नहीं चलेगा आपको, थोड़ी देर के बाद that will start to take its effect. You have to be careful. That was straight into his forehead. चलिए, he will get attention. Hemant Mohite comes into field. रागा भी बहुत एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है, कितने सालों से नई गेंद के साथ 5 से 6 सीजन से गेंदबाजी करते हैं, कई सालों से खेल रहे हैं और वो नई गेंद के साथ ही गेंदबाजी करते, तो उस लिहाज से काफी एक्सपीरियंस्ड भी है, काफी सूझबूझ के साथ अपनी गेम को खेलते हैं, सुलझे हुए गेंदबाज है। चलिए, केसीडी पावर प्ले के 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, रन संख्या है 29 रन, काफी अच्छा रन रेट। काफी क्रिकेट खेलना बाकी भी है इस वक्त, इस इनिंग्स के शुरुआती के पल है, काफी क्रिकेट खेलना बाकी है, लेकिन कहना होगा कि टीम सुपर किंग्स हैव स्टार्टेड इन राइट अर्नेस्ट, इट्स द राइट अप्रोच। टीम सुपर किंग्स के पास भी एक अच्छा फैन सपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा फैन सपोर्टर्स लेके आती है टीम चार्जर्स। वॉरियर्स के पास अच्छा फैन सपोर्ट, सुपर किंग्स के पास भी बड़ी तादाद में सभी सपोर्टर्स मौजूद होते हैं। वन ऑफ द ओनर्स को ओनर्स मिकी मोदी इज इंजर्ड। बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट गेंद। ये पिचिंग कंसिस्टेंटली होनी चाहिए,
ये वाली पिचिंग बल्लेबाज को कश्मकश में डालेगी, फ्रंट पे खेलूं या बैक पे खेलूं। देखिए ये छोटी गेंद किसी भी तरह से बल्लेबाज को तकलीफ में नहीं डालेगी। ये कंटेनिंग लाइन है, लेकिन ये विकेट टेकिंग लाइन और लेंथ नहीं है, कंटेनिंग लाइन और लेंथ है। ओ दूसरी बार उसी फील्डर के पास गेंद थोड़ी सी आगे गिरती हुई। Half-hearted shot. You have to be full-hearted, full-blooded in your shots. No half measures. Yes, because he's injured, वो bottom hand शायद इतना एक्शन में नहीं होगा। हर शॉट के बाद वो स्टिंग होगा उनके राइट पाम में। व्हाट अ शॉट, किस तरह का शॉट निकाला देखिए अपने पिटारे से। कुछ भी कर सकता है, मैच के किसी भी मोड़ पर किसी भी तरह का अनपेक्षित शॉट दर्शा सकता है ये प्लेयर। जुगराज सेजल ग्रुप छक्का, रन संख्या 35 रनों पर, एफर्टलेस शॉट एकदम। मंशा यही होगी कि एक बड़ा नॉक खेले, उसी फिराक में होंगे। और लगातार क्रिप्टोमेनिया चौका, छक्के के बाद ओवर की समाप्ति, केसीडी पावर प्ले समाप्त हुआ है और इस वक्त टीम सुपर किंग्स एक बहुत ही अनुकूल स्थिति में, सही मायनों में एक अच्छी शुरुआत, सभी विकेट्स हाथ में है, एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों ही सलामी बल्लेबाज के माध्यम से। और जुगराज मेहता काफी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए, विकेट पे डटे रहना होगा, अपने आप को अब गेंदबाजी करने के लिए उतारते हुए कप्तान राजेश पटनी। Yes, we hope that Jaju is okay. He's getting some attention. केसीडी पावर प्ले की समाप्ति पर रन संख्या टीम सुपर किंग्स के लिए 35 रन बिना कोई नुकसान के। राजेश पटनी एक बहुत ही अच्छे दर्जे के वरिष्ठ क्रिकेटर, जिस तरह के जीन्स आर्यन पटनी में है, आप अंदाजा लगाइए कि राजेश पटनी में भी कुछ उसी तरह के जीन्स है, तो उस लिहाज से काफी अच्छे क्रिकेटर है, बहुत ही सुलझे हुए क्रिकेटर है, सूझबूझ के साथ अपने गेम को सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हर वक्त हर पल मैच में बने रहने की कोशिश करते, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ही विल नेवर सरेंडर। और थोड़ी सी हिचकिचाहट, गए सीजन में गेंदबाजी नहीं की थी, शोल्डर पे सर्जरी हुई थी, लेकिन दिस सीजन इज बैक, और जो उनका जो आर्म मूवमेंट है काफी सटीक लगता होगा। एक सीजन पहले तो हाथ थोड़ा सा क्रॉस आ रहा था, लेकिन इस सीजन में बिल्कुल स्ट्रेट आता हुआ, तो दैट सर्जरी सीम्स टू हैव वर्कड फॉर हिम। मेरे लेफ्ट साइड में है मोनिश शाह, इज मिसिंग द सीजन बिकॉज ऑफ एन इंजरी,
But what a fantastic experienced bowler this man is, Monish. We are missing him. He's got such a good head over his shoulders. Monish always very reliable, consistent. Whichever team he plays for, he will always be one of the main members of that think tank. Monish is involved 100% in the execution of this season. Oh, no need to run for that one. That loose ball has been put away. और यही चैंपियन प्लेयर की निशानी होती है कि जब इस तरह की लूज गेंद मिले तब अंजाम तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है अच्छे प्लेयर के लिए. मिस नहीं कर सकते और वहां पर मिस नहीं किया जुगराज ने. दैट वाज अ फ्रीबी, दैट वाज अ न्यू ईयर गिफ्ट बाय राजेश पटनी. अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई यहां पर टीम वॉरियर्स कयामत की शाम है. अच्छी टाइमिंग और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. अच्छा कलेक्ट किया उस आउटफील्ड में. वहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है. अच्छे फॉर्म में इस वक्त नजर आते हुए जुगराज. एक लंबी पारी खेलनी होगी. इस ओवर में थोड़ी सी शॉर्ट गेंदबाजी की है राजेश पटनी ने. ऑफ साइड पर 3 फील्डर्स है, डीप में 2 फील्डर्स. लेग साइड पर 3, 2 ऑफ साइड पर डीप में 5 लोग तैनात किए हैं बाउंड्री लाइंस पर. और थोड़ी सी साधारण विकेट कीपिंग वहां पर. ज्यादातर ये बहुत ही सटीक विकेट कीपर है गौरांग. मिस कर गए. ओवर की समाप्ति. चलिए 5 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन ओवर्स की समाप्ति के बाद रन संख्या 47 रन बिना कोई नुकसान के. जिस तरह की शुरुआत की अपेक्षा थी, आशा कर रहे थे टीम सुपर किंग्स, उसी तरह की शुरुआत हासिल होती हुई. लेकिन इस शुरुआत को और ज्यादा पुख्ता करना होगा. जब आपको एक अच्छी शुरुआत मिलती है इस तरह के विकेट पे, तो वो उस शुरुआत को मैच विनिंग एफर्ट में तब्दील करना यह आपका कर्तव्य बनता है. यू हैव टू मेक hay while the sun shines. After getting set, you cannot throw your wicket away. You cannot get out to a non-wicket taking delivery. चलिए अब अच्छी गेंद पर आउट होते तो कोई बात नहीं. गलत शॉट खेलकर आप अगर आपकी विकेट को गिफ्ट करते हैं तो फिर वो इनजस्टिस होगा. नमन चावला, इनके कंधों पर भी काफी कुछ निर्भर है आज की शाम. ना केवल आज की शाम, पूरे सीजन में काफी कुछ निर्भर होगा नमन चावला पर. वो कैच सीधा फील्डर की गोद में जा गिरा था. देखिए थोड़ा सा लेट जज किया, जिसके चलते उनको रश करना पड़ा. थोड़ा सा लेट जज किया, देन ही हैड टू स्प्रिंट. और क्योंकि स्प्रिंट हुए, अपने आप को आखिरी वक्त पर रोक नहीं पाए, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड के साथ आए क्योंकि थोड़ा सा देरी से जज किया था. चलिए कैच छूटा. पहले ही गेंद के साथ नमन ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी. बहुत ही बढ़िया पहली गेंद की थी. फ्लाइट में चकमा दिया था, चारों खाने चीत किया था, बल्लेबाज को मजबूर किया था. गलत शॉट खेलने पर नमन ने 49 रन बिना कोई नुकसान के.
Oh, बढ़िया गेंद देखिए. That really hissed like a cobra. That read from a length. बढ़िया गेंद. That must have landed on a spot. Naman Chawla will be excited with the kind of assistance. मैंने पहले ही कहा था कि स्पिनर के लिए काफी मदद है इस विकेट में. गेंद थोड़ी सी रुक कर आई और गैप में खेला. 4 रन्स मिले. लूज गेंद पर प्रहार किया. क्रिप्टोमेनिया चौका बटोर लिया. यहां पर 50 रन मुकम्मल हो चुके. 53 रन बिना कोई नुकसान के. सुपर किंग्स के खेमे में खुशी की लहर. सीटी और झंडे बाहर निकलते हुए. बहुत ही बढ़िया शुरुआत. अच्छी शुरुआत देखे. देखते ही देखे 170 रनों में से 50 रन बन चुके. अब केवल 120 के करीब चाहिए. सेजल ग्रुप छक्का. लूज गेंद को सही अंजाम तक पहुंचाया. यह क्लास है जुगराज का. जब आप जीएससी के इस तरह के दर्जेदार प्लेयर को गेंदबाजी करते हो तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है. किसी भी तरह से गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है जुगराज. अच्छी गेंद करोगे तो ठीक है, वरना तो आपको बख्शेगा नहीं. He will show no mercy. He will put you away all day and all night. छह के तलसानिया कंस्ट्रक्शन ओवर्स मुकम्मल होने के बाद रन संख्या 59 रन. केवल अब 112 रन और बनाने हैं. Only 112 more to win now. The kind of start that both these batters have given, especially Jugraj, the tension in the camp of team Super Kings has eased down. They are looking more confident. और अब स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल होती हुई टीम वॉरियर्स के लिए विपरीत होती हुई. एक ही ओवर के बाद अपने आप को रोका है, क्योंकि थोड़े से साधारण नजर आए थे राजेश पटनी. उस लिहाज से अपने आप को रोका है और आर्किटेक्ट को, हार्दिक को गेंदबाजी दी है. देखिए, चिंतन को केवल यही करना है कि जब इस तरह के मूड में है, जुगराज तो साझेदारी करनी है. He just has to be a part of the partnership. चिंतन केवल यही करना. He just has to be a part. जब कभी लूज गेंद मिलेगी तो चिंतन भी काफी सक्षम प्लेयर, अच्छे रेंज ऑफ शॉट से लूज गेंद की प्रतीक्षा करनी होगी. चिंतन अच्छी गेंदों को गैप में खेल के स्ट्राइक लौटानी है. आक्रामक रवैया इख्तियार किए हुए जुगराज को साझेदारी में साथ निभाना है. यही काम है इस वक्त चिंतन का. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. क्लीन पिकअप एंड थ्रो. क्लीन पिकअप. Oh, that is the half century to Jugraj. Yes, Jugraj. Well done. देखिए, जुगराज जैसे प्लेयर ने, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टू टेल यू द ट्रूथ, 5 मरतबा इस लेवल पे बल्लेबाजी करने आएगा तो कम से कम 4 बार 50 बनाने हैं. 5 में से 4 बार. Chintan also joins the party now. What a clean hit by Chintan. What a clean hit. That will take his confidence to the next level. Cryptomania boundary. At this time, team Super Kings are on cruise mode. They are on cruise mode. Team Warriors in a spot of bother. They need to pull up their socks. They need to pull up their socks. They need to get their act together. Team Warriors. देखिए, हमारे पैनलिस्ट ने, अनिल दुगर ने कहा था
कि इतना आसान नहीं होगा सुपर किंग्स को जीतना ये मैच, लेकिन शायद जीतेगी ये कहा था। करण पाजी ने भी कहा था कि मैं मेरी राशि में निवेश करूंगा टीम सुपर किंग्स में। कैप्टन अभय वैद्य ने भी यही कहा था और उसी रेपुटेशन पर खरे उतरते हुए टीम सुपर किंग्स एक निहायत ही खूबसूरत शुरुआत हुई है। काम अभी तक हुआ नहीं है, शुरुआत बिल्कुल पुख्ता हुई है। क्या हुआ वहां पर, क्या किया क्या? मैं तो ये कहने को तैयारी कर रहा था कमेंटेटर्स का कैच शूट, और उस इवेंट में उस ओकेशन में रनआउट के रूप में विकेट खोया है। ये तो स्लॉपी क्रिकेट है, खराब क्रिकेट है सुपर किंग्स की तरफ से, खराब क्रिकेट नहीं होना चाहिए, ये इवेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। चले, जिस विकेट की खोज में थी टीम वॉरियर्स, उस शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज विकेट को रनआउट के रूप में पाए। चाहे विकेट कैसे भी आए, विकेट लेना जरूरी था, इस साझेदारी को तोड़ा है। अब में भी शायद एक नई ऊर्जा का संचार होगा और एक नए जोश और जज्बे के साथ विकेट में इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेंगे। और अब अंदर आते हुए रौनक सचदेवा, जुगराज को 2 लाइफ मिल चुकी है, तीन। तो अब किस तरह का डैमेज जुगराज ने करना चाहिए टीम वॉरियर्स पर, वो आप ही अंदाजा लगाइए। तारीफ भी करनी होगी कि अपनी इंजरी के बावजूद ये मैच खेल रहे हैं। He is looking hungry for runs. You just should not be hungry for runs as a top player. You should be greedy for runs. You have to be greedy. केवल हंग्री होने से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू बी ग्रीडी। जितने रन्स बने आपके बल्ले से उतना ज्यादा अच्छा, और उतने और कम भी होंगे। जितने भी आप रन्स बना लो उतने कम होंगे। देखिए 170 रनों का जो लक्ष्य टीम वॉरियर्स ने बनाया, वो भी जबरदस्त फाइटिंग क्रिकेट खेलने के बाद अब थोड़ा सा मन बनाना होगा कि फाइट करे, चुनौती पेश करनी होगी टीम वॉरियर्स ने, वरना इस वक्त तो बिल्कुल क्रूज मोड में है। शायद ये वाला विकेट संजीवनी का काम करे टीम वॉरियर्स के लिए, मैच में वापसी रचने का एक कारण बन सकता है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रौनक सचदेवा बहुत ही ज्यादा सक्षम प्लेयर है, परफेक्ट नंबर 3 है, परफेक्ट ऑलराउंडर। चलिए देखना है कि आज की शाम किस तरह से रौनक अपनी रंग बिखेरते हैं। हार्दिक गेंदबाजी करते हुए डीबीएस पेविलियन एंड की तरफ से अटैकिंग फील्ड, बिल्कुल सही सोच। हमारे 2 और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स मौजूद है। अब रमन खत्री एंड प्रसाद करकेरा दोनों का स्वागत है। 7 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन ओवर्स की समाप्ति के बाद 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए कहां पर वो 65 रन पे बिना कोई नुकसान के 66 रन 1 विकेट पर, उतना अच्छा नहीं सुनने में आता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। 65 फॉर नो लॉस एंड 65 फॉर 1, इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। ये वापसी का कारण बन सकता है टीम वॉरियर्स के लिए। इस रनआउट के चलते जो विकेट प्राप्त हुई है टीम वॉरियर्स ने, रंग में भंग डाल सकते हैं उस विकेट के चलते। ओके, looks like Jaju is okay. That is a good news.
और 4 रन्स मिले। जब आप उस रीजन में फील्डिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो गेंद आपके लेफ्ट साइड पर ही आएगी, कभी भी राइट साइड पर नहीं जाएगी, लेफ्ट साइड पे ही आएगी गेंद, ऑलवेज 10 out of 10 times. Cryptomania boundary, important runs, 70 for 1. बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। अभी तो जाजू ठीक लग रहे हैं, लेकिन कल सुबह जब उठेंगे और आईने में देखेंगे तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। आइसिंग कर लिया तो ये काफी अच्छी बात है। इमीडिएट प्रॉम्प्ट अटेंशन मिला है। A cat has 9 lives. How many does Jugraj have? Already 4. And Cryptomania boundary. Will he crypt his own story here? Jugraj looks like it. Cryptomania boundary. वेरी वेल बोल्ड। देखिए नमन लेग स्पिनर तो यही कर सकता है, अपनी विकेट्स को बाय करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में। दिस इज एडिंग सॉल्ट टू इंजर इन अ बिग वे। जुगराज जैसे बल्लेबाज को 4 लाइव्स देना यानी कि आप अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सेजल ग्रुप छक्के के साथ रन संख्या 80 रनों पर, 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया इनिंग्स खेल रहे। इंजर्ड है, 4 लाइव्स मिले लेकिन उसके बावजूद काफी दिलचस्प नॉक नजर आता हुआ इनके बल्ले से। चलिए एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में मेरे बगल में है करण सिंह वालिया। चले भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लूज गेंद को प्रहार किया, 4 रन्स बटोर लिए। क्रिप्टोमेनिया चौका, रन संख्या 84 रनों पर। देखते ही देखते करण बाजी 84 हो चुके हैं। हेलो, और हम देख रहे हैं शोल्डर्स भी ड्रॉप हो रहे हैं टीम वॉरियर के, थोड़ा स्ट्रेटजी सही नहीं आ रही। एक और चौका, और मैंने पहले ही कहा था कि जो 8 ओवर जो दूसरे बॉलरों ने डालने हैं वो बहुत ही क्रूशियल रहेंगे, और वो पूरी तरह से बटोरते हुए टीम सुपर किंग और जुगराज। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जुगराज एक बहुत ही फास्ट 100 भी कर देगा जिस ढंग से खेल रहा है। 33 बॉल में 72 पे खेल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है। जब इतने लाइव्स आपको मिलते हैं तो यू हैव टू मेक them count. The divine intervention is with Jugraj and he's got to notch up that 3-figure mark. एकदम सही कहा। आज तो भगवान भी सुपर किंग और जुगराज के ऊपर मेहरबान है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये फील्डिंग करनी पड़ेगी टीम को अगर ये मैच जीतना है तो। और अगर किसी जुगराज जैसे प्लेयर के आप 4 से 5 कैच ड्रॉप करोगे तो वो 100 किए बिना अगर बाहर आ जाए तो उसी की गलती है। बिल्कुल। टीम की प्लेयर्स न होने के बावजूद 170 रनों का लक्ष्य दिया, तो बल्लेबाजों ने तो काफी अच्छा कार्य किया है टीम वॉरियर्स के, लेकिन गेंदबाजों को थोड़ा सा खरा उतरना होगा इस चुनौती पर। अभी भी मौका है, अगर 1-2 विकेट से लपक लेते हैं तो शायद मैच में वापसी रच पाएंगे। विकेट लेने के लिए उन्हें अपने मेन बॉलर्स को हिलाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा।
बहुत ही अच्छी बॉल। देखिए रौनक का सचदेवा के लिए बिल्कुल ये मंच साजा हुआ है। बहुत ही अच्छी स्थिति में अपना नेचुरल गेम खेल सकते बिना कोई टेंशन के, वो वाली स्थिति है। रिस्क लेना भी नहीं चाहिए रौनक को, जब जुगराज इतनी अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं उन्हें सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट करके जुगराज को उनका गेम खेलने देना चाहिए। आज सब कुछ उन जुगराज के हिसाब से हो रहा है। अच्छा टर्न करा रहे हैं और मेरे को दिख रहा है कि जुगराज थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, शायद कुछ हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर गेंदबाजों ने अपॉर्चुनिटीज तो हम एक नए बॉलर से जो टूर्नामेंट में पहली बार बॉल कर रहा है, इतनी अच्छी बॉलिंग की उपेक्षा नहीं रखते, बट अच्छा टप्पा पकड़ के टर्न करा रहे हैं डॉक्टर आर्किटेक्ट हमारे। अपॉर्चुनिटीज तो काफी अच्छी क्रिएट कराई, लेकिन वो गेंदबाजी को इंपैक्ट कराने के लिए जो धार देनी चाहिए फील्डिंग ने, वो वैसा की नहीं मिली अच्छी फील्डिंग की। मुझे लगता है यही वो आर्किटेक्ट है जो वॉरियर को चाहिए। बहुत ही अच्छा टप्पा पकड़ा हुआ है हार्दिक ने और स्लो टू द एयर गेंदबाजी कर रहे, और जब इतनी स्लो गेंदबाजी करते तो बल्लेबाज को थोड़ा सा और पावर लगाना पड़ता है, टाइमिंग इक्वेशन से बाहर चली जाती है। बहुत ही अच्छी बॉल पड़ के टर्न हुई और ये विकेट अपना कमाल दिखाती हुई, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि विकेट टर्न होगी। और नेक्स्ट ओवर ड्रिंक्स है, मुझे लगता है ये इस इनिंग का सबसे इकोनॉमिकल ओवर था जिसमें सिर्फ 4 ही रन आए हैं और एक वाइड, 5 रन। देखिए टीम वॉरियर्स ने अपने पहले 10 ओवर्स में 50 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ 100 का आंकड़ा शायद तय कर जाएगी सुपर किंग्स, केवल 1 ही रन चाहिए, 6 गेंदानी बाकी है, 1 ही विकेट खोया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह की शुरुआत हासिल हुई है। मैच खोल दिया टीम सुपर किंग ने 93 इन 9 ओवर्स, इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। और मुझे लगता है अगर अटैक नहीं करेंगे तो ये टीम सुपर किंग वॉरियर से मैच ले जाएगी 15 ओवर के अंदर। वॉरियर को अपने बेस्ट बॉलर लाके फुल अगले 5 ओवर अटैक करना पड़ेगा। निखिल पटेल जी को मैं बाय बाय करता हूं। राजेश पटनी अपने आप को उतारा है फार एंड से। अच्छी बॉल, 2 रन की कॉल, मगर देखना है कि 2 होते हैं कि नहीं। अगर टीम सुपर किंग्स के तरकश में कोई सेंध लगानी है तो राजेश पटनी वो बॉलर हैं जो ये काम कर सकते हैं। आज उन्हें अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा, जो उन्होंने आर्यन को सिखाया, यहां पे क्रिकेट खेलते हुए खुद सीखा, और अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस। 1-2 अच्छी विकेट, 1-2 अच्छी डिलीवरी और मैच कब घूम जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। Yes, he will have to fall back upon the frontline bowlers if he has to break the partnership. The frontline bowlers have to be bowling.
Oh, maybe there was a nick in it. जो मैंने कहा कि राजेश पटनी ऐसा कुछ कर सकते हैं और ये कैच ड्रॉप हुआ. मुश्किल क्या था, फर्स्ट स्लिप होती तो शायद आसान रहता. अच्छी बॉल, बैट्समैन को आगे खींचा, स्लोअर थ्रू द एयर. देखिए पाजी, जब पहला ओवर राजेश ने इस एंड से किया था तो थोड़े से साधारण थे, अपने आप को रोका, दूसरे गेंदबाज को लाए, अपना एंड स्विच किया और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए उस एंड से. एक बार फिर बीट किया. और आप देखिए जब ये ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर को डालता है, पड़ के बॉल बाहर जाती है तो लेफ्ट हैंडर को भी प्रॉब्लम होती है. तो बहुत ही अच्छा मूव है कि ये रौनक को स्ट्राइक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सिंगल नहीं दे रहे हैं, आसान प्रेशर बना रहे हैं. अच्छा ओवर, 2 ही रन आए इस ओवर में, बहुत ही अच्छा ओवर डाला है. ऐसे कम से कम नहीं तो 4 से 5 और ओवर चाहिए. बढ़िया. 10 ओवर के बाद 95 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. That really tells you a story. It's time for a commercial break. Over to Pramod Kashyap and team.
Hardik Panchal to continue. A bit of fumble and will cost the team one extra run. Vikas Linga waiting in the wings, all padded up. He will be a happy captain. The kind of start that team Super Kings have had. They are on cruise mode at the moment. Just the kind of start that the captain and the think tank would have wanted. The ideal start. Picture perfect start. 97 for 1. With that wide run, the score on to 98. Just 2 runs short of the 100-run mark. 9 wickets in hand. Jugraj is going great guns. Cryptomania boundary, 100 runs up on the board for Team Super Kings, 102 to be precise. 102 in the celebration mode, the camp of Team Super Kings, and why not? Important match, 102 for 1, that tells you a story. You got to be the master of your own destiny. (103). Ronak Sachdeva should be looking to stay at the wicket till the very end. Till the time you knock off those winning runs, Ronak should look to stay at the wicket. (104 for 1). A warm welcome to one of our organizing committee members and the good player himself, Amarkant Jain. (11 overs), 104. One more Ketal Sanya construction over comes to an end. Nicely placed at this stage, Team Super Kings. The organizing committee members for Mr. Kaushik Mehta, Mr. Subbu, Amit Mehrotra, Manish Sharma, Shailesh Chado, Avinay Surana, Captain Abhay, Monish Shah, Ravi Singhania, Yash Gadia, Raman Khatri, Prasad Karkera, Amol Polke, Pramod Kashyap, and Happy. Every day at the start of the match, we have at least 4 organizing committee members here, and as we move forward, we have at least 8 to 9 members present at any given point of time. Oh, that is such a clean strike. What a shot. Clean strike. Sejal Group 6 takes the score to 110. He moves on to 82 of 38 balls. Jugraj.
This is easy meat. You cannot be bowling to Jugaraj in those areas. He will murder you. 86 with that Cryptomania boundary. Runs coming in thick and fast. The shoulders have dropped. The energy is down. Team Warriors is looking down on the mat. Looking down the barrel of the gun. They are in dire straits. They have been pushed to the deep end of the sea. They have been thrown to the gallows. The partnership is worth 48 runs of 28 balls. So such a fine partnership here. Thank you Abdul and Roshan for the prompt statistics. And that ball connected with the bottom part of the bat of Jugaraj. So that is why it wasn't timed. And it also did not make the right kind of sound. Rajesh Patni trying everything at his disposal. The 50-run partnership between Ronak and Jugaraj. Out of those 50, 11 runs scored by Ronak and 39 scored by Jugaraj. That really partnership tells you the story. It also reflects that Ronak has played sensibly. He's playing for the team. That kind of a partnership is also an indicator of the smart contribution from Ronak Sachdeva. He should be looking to come unbeaten now. Forget what Jugaraj does. Ronak Sachdeva has to come unbeaten. Yes, that is the indication of the second and the final KCD power play. 2 overs of power play, and in comes into the attack Raga. Welcome to Jewel Goel. Rahul Gala has gone for 22 runs in his first 2 overs. He will be looking to make amends. Such a fine bowler. The man on strike is Jugaraj. He's on to 88 of only 42 balls. If he hits a century, वो उसका जो celebration होगा वो देखने लायक होगा. Thickish inside Ishesh, the ball might run away, and that Cryptomania boundary will take Jugaraj into the 90s. Into the 90s. आजकल वो मॉडर्न डे क्रिकेट में से वो जो नर्वस 90s वाला जो टैग था ना आजकल सुनने को नहीं मिलता है. वो नर्वस 90s को हम लोगों ने बाहर कर दिया है. T20 में तो कम से कम वो नर्वस 90s वाला सीन ही नहीं है. टेस्ट मैच में आज भी है, वनडे में भी कुछ हद तक. Into the nervous 90s, 92, Jugaraj. Well kept. 121 for 1. They are on cruise mode. Up and away on their way towards clinching a big victory.
Oh, no chance whatsoever. 96 with that Cryptomania boundary. Jugraj 125 the team. Just one Cryptomania boundary away from a century. And even Kuldeep Paji knows that if he gets a century, कुछ अलग कर दिखाएगा वो विकेट पर. उसका सेलिब्रेशन कुछ अलग होगा. कुछ तो करेगा वो. Dot gained. टू 23 रन्स बना चुका है जुगराज इस टूर्नामेंट में. ऑरेंज कैप के स्टैंडिंग्स में नंबर 3 पर पहुंच चुका है. अब तक 4 सेंचुरीज देखने को मिले हैं. आर्यन पटनी, वेदांत गाडिया, कुणाल भावसर और सौरभ लोहिया. और ये 5वां सेंचुरी मेकर. कमेट द आवर, कमेट द मैन. अरे अभी क्या उसका राइट हैंड नहीं दुख रहा है क्या? वो बैट घुमा रहा है राइट हैंड से. क्या हुआ सर? तलवार घुमा रहे हैं. पहले तो हाथ दुख रहा था, अभी नहीं दुख रहे. क्या बात है. वेल डन. ओहो, वेल प्लेड जुगराज. He deserved that century. That will take his confidence to the next level. An entertaining knock. हालांकि 4 लाइफ मिली है, लेकिन इस इनिंग्स के दरमियान कुछ ऐसे अनबिलीवेबल शॉट्स उनके पिटारे से निकले. एफर्टलेस शॉट्स खेले, बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास शॉट्स खेले. ही वॉज लुकिंग द क्लास अपार्ट. 130 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीत की कगार पर जोरों से दस्तक देती हुई टीम सुपर किंग्स. इस वक्त जुगराज की बल्लेबाजी के लिए कोई तोड़ नहीं है. आज जुगराज कुछ भी कर ले, पूरी कायनात जुगराज के साथ है आज. 134 उस क्रिप्टोमेनिया चौके के साथ. 42 गेंदों में अब आलम यह है कि 37 रन बनाने हैं. 37 to win of 42 balls, 9 wickets in hand. The flags are out for the Super Kings. This was a big match, and if Super Kings goes on to win this match, they will be in that top 2-3 positions maybe. Not quite sure, but that will be a big morale booster. बढ़िया शॉट, आत्मविश्वास भरा शॉट, सेजल ग्रुप छक्का. सेजल ग्रुप छक्के के साथ रन संख्या अब 140 रनों पर.
इट्स बिन रेफर्ड, चलिए रेफर की बाउंड्री दिया, क्रिप्टोमेनिया चौका कंफर्म हो चुका है। चलिए क्रिप्टोमेनिया चौका 168 रन, 168 138। और जबरदस्त लॉन्च किया अपने आप को। इस मर्तबा कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंफर्मेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो गेंद काफी लंबी गई। सेजल ग्रुप 6 144 रन, अब 30 रन से भी कम चाहिए, केवल 27 रनों की दरकार। अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। चले, जैसे वो गेंद गैप में गई, क्रिप्टोमेनिया चौका लिखा हुआ था उस गेंद पर। जीत की कगार पर दस्तक देती हुई टीम सुपर किंग्स। अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि किस तरफ ये मैच जाएगा। 148 रन हो चुके, केवल एक विकेट के नुकसान पर, केवल और 23 रन बनाने हैं। मामला बिल्कुल पेचीदा होता हुआ वॉरियर्स के लिए। देखिए थोड़ा सा फ्लाइट में बीट हुए थे, आखिरी वक्त पर अपना शॉट एडजस्ट किया। अच्छी फील्डिंग। एक 148 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 36 गेंदों में 23 रन बनाने हैं। मोमेंटम इस वक्त टीम सुपर किंग्स के पलड़े में है। आर्यन, माफ कीजिएगा, राजेश पटनी ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन जब आपके सितारे गर्दिश में हो तब हर दाव उल्टा पड़ता है, और कुछ ऐसा ही हुआ है टीम वॉरियर्स के साथ। नथिंग वर्किंग फॉर देम। क्रिप्टोमेनिया चौका, चलते चलते उस शॉट को खेला, गेंद की लंबाई को खींचा, तो उसके बावजूद क्रॉस बैट के साथ अपरकट किया। 152 रन हो चुके हैं, 150 अप। नजाकत से खेला, डेफ टच, चीकी शॉट, 4 रन मिले। क्रिप्टोमेनिया चौका, 156 रन, 34 गेंदों में केवल और 15 रन बनाने हैं। 9 विकेट्स हाथों में है, केवल औपचारिकता से हम गुजरते हुए। रिजल्ट तो बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। शानदार शतक, 112 रन, 50 गेंदों में 112 रन से मुकम्मल की है जुगराज ने। 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट, 200 से ऊपर। क्रिप्टोमेनिया बाउंड्री।
94 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। केवल 46 गेंदों में 94 की पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के लिए भी वो स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का है। अगर अपने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के बगैर 170 रनों का लक्ष्य इतने कम समय में अगर सुपर किंग्स तय कर जाती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप है। और जब एक मैच विनिंग नॉक खेलते हैं जुगराज, एक अगर 45 मिनट भी अगर विकेट पे रुक जाते हैं जुगराज, तो फिर मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है, चाहे फिर ऑपोजिशन कोई भी हो। The final nail in the coffin. The final nail, the death blow. 165, just one scoring shot away from a big victory. Such a big victory. To chase down this mountain of 171 runs in such quick time with 9 wickets in hand. That will take the morale of a team Super Kings to the next level. Only 6 more to win. Partnership has become worth 99 runs. Partnership 99 रनों की ये साझेदारी, जिसमें से रौनक ने बनाए हैं 29 और 70 रन्स बनाए जुगराज ने। But yes, very sensibly played by रौनक, very sensibly. 2 विकेट भी लिए हैं। One bounce to Vicky. Dot ball. Jugraj maybe wants to finish the innings with a 6. काफी खुश नजर आता हुआ इस वक्त सुपर किंग्स का कैंप, और क्यों नहीं वॉरियर्स के कैंप में थोड़ी सी हताशा, थोड़ी सी मायूसी, लेकिन 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, तो अगर इस मैच को हारते हैं तो फिर 5 में से 2 हारेंगे और 3 जीते हुए होंगे टीम वॉरियर्स। तभी भी एक अच्छी स्थिति में होंगे टीम वॉरियर्स, लेकिन अपनी पोजीशन को और ज्यादा पुख्ता करते हुए टीम सुपर किंग्स। And that is the 100 partnership, 100 plus partnership. The score on to 169. Just 2 more to win. Cryptomania boundary, congratulations to team Super Kings for that big victory, and 125 not out is what Jugraj Mehta has scored. 29 not out is what Sachdev has notched up. 125 or 55 balls.
125. Yes, so may I invite one and all to please get to the presentation arena for the presentation party alongside our cricket committee chairman Kaushik Bhai Mehta. We have got Kuldeep Paji, Mr. Jaydev Gupta, Mr. Lalit Vij, Prasad Karkera, Monish Shah, Captain Abhay, Shailesh Chadwa and Happy. This is the presentation party. I'll invite one and all to please get to the stage. Though it's an early finish. "45 minutes an early finish than the regular time." Looked as if Jugraj Mehta had an appointment to keep. Yes, Lalit Vij is still trying to encourage his team. Yes, they are in a good position and they remain to be one of the best teams, Team Warriors. Yes, we get to the stage. Kaushik Bhai Mehta, Kuldeep Paji, Jaydev Gupta, Lalit Vij, Prasad Karkera, Monish Shah, Captain Abhay, Shailesh Chadwa and Amarkant Jain. I'll also request Chirag Dedia to please step up. Chirag Dedia. Time to thank our title sponsor, the Development Bank of Singapore, for being the title sponsor. Sejal Group, the associate sponsor. The Shakti Plastic Industries, associate sponsor. K. Talsania Construction, the associate sponsor. KCD and the Cryptomania web series, the associate sponsors. Warm welcome to Mr. Chirag Dedia. Yes, the owners, Mr. Lalit Vij and Mr. Jaydev Gupta, you need to step up. Yes, may I request both the teams to please come along. Yes, I'll invite Superkings and Warriors to please come along. गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द स्टेज के सामने आए. फिर से एक बार जयदेव भाई गुप्ता से गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर आए. Aditya Gupta, you also can please come along. The two owners, Jaydev Gupta and Lalit Vij. Yes, good evening and welcome to the post-match presentation. Congratulations to Team Super Kings for that big victory. It never seemed as if this match would get over 45 minutes before the allotted time. That was a steep target to chase, 170, but tonight Team Super Kings was just too good. It's time for the presentation ceremony to get underway. Let me invite the losing team captain to step up and have a chat with us. That is Rajesh Patni. A warm round of applause for him. Rajesh Patni, hard luck.
In spite of three very good players being not in your camp, आपने 170 का एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य स्थापित किया, लेकिन कुछ कैचेस छूटे और जुगराज जब इस तरह के फॉर्म में और उन्हें 4 लाइफ मिलेगी तो वो आपको डैमेज करेगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बड़ी जीत हासिल की सुपर किंग्स ने, उनका नेट रन रेट भी किधर से किधर चला जाएगा अब। कांग्रेस टू सुपर किंग, और पहले ही था कि ये टॉप 2 की टीम है और ऐसा ही उन लोग ने खेला है, और आफ्टर जुगराज को इतना लगने के बाद में भी जो उसके शॉट्स में पावर, सुपर जुगे सुपर, और सुपर बैटिंग बाय निशिल, जाजू एंड हार्दिक पंचाल। वी वर 2-3 बॉलर शॉट, लेकिन बैड लक के वी लॉस्ट टू मेनी कैचेस। Yes, sir. Thank you. In spite of that, Warriors will always be one of the best teams. And the moment you get Aryan and Vijay Singh back, you will look a different team. Hard luck. Congratulations. It's time for me to invite the winning team captain, the happy man, Vikas Linga. Who would have thought that number 4, number 5 batsmen will not come into action to chase down this mountain? A terrific victory. Vikas, you were padded up right from ball number 1, but you will be happy that you did not have to go to the wicket. That is such a big victory that really takes you to the next level, into that comfort zone. Terrific victory. Just your thoughts on this fantastic performance by Team Super Kings. I wouldn't mind if I be padded up for the entire tournament. And definitely our batting is very strong. I'm not worried about our batting. Mickey was missing today. Still we showed great character with our batting. But we need to pull our socks for our fielding and bowling, especially the last 10 overs. We'll work on it and we'll come back stronger. Yes, so that's the winning team captain. Congratulations and best wishes for the remainder of the tournament. To do the honors of giving away the man of the match award, it's going to be Mr. Chirag Dedia. And yes, it is Jugi no. It's anybody's guess. Jugraj Mehta, the man of the match. 125 runs of only 55 balls, 19 boundaries and 6 sixes. Well played, well done. The man of the match award winner, the century maker, the 5th century maker in the tournament. Jugraj, after a very long time, we see that century from your blade, and you require that to get into that big league. You are already a part of the big league, but this century will give you that extra confidence. आपका हाथ दुख रहा था, लेकिन सेंचुरी के बाद तो जरा भी नहीं दुखा. इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे आर्मी वालों के लिए रहता है कि उनको अगर गोली लगती है वो लोग फिर भी खेलते हैं, तो जैसे विकास भैया ने मेरे को समझाया था, 3 दिन से समझा रहे कि तेरे को लगी है बट तेरे को खेलना है. सो लाइक माय मॉम आल्सो टोल्ड बिफोर आई वेंट फॉर बैटिंग कि ग्राउंड पे जाते तो एक बार वंस यू आर ऑन द फील्ड दैट्स योर वॉर जोन. सो वहाँ पेन वेन फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सो कितना भी दर्द हो रहा है वहाँ तो खेलना ही है. सो आई वुड थैंक विकास भैया फॉर पुशिंग माय मॉम, एवरीबडी हु वाज देयर फॉर मी टुडे. थैंक यू सो मच. Yes, I'm not going to be praising you too much because we have yet to see the best of Jugraj. Mind you, yet to see your best. Yes, tomorrow's match team, Blasters and Chargers. Blasters and Chargers, 6:30 p.m. start tomorrow. Thank you so much. Good night. Let's take care.